English. Over to Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. नमस्कार। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान में स्थित समुद्री तट पर भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस सुमित्रा से मैं जैनेंद्र अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष सजीव प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, भारत के राष्ट्रपति और भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर श्री रामनाथ कोविंद इसी आईएनएस सुमित्रा में सवार होकर भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा करेंगे और ये अवसर किसी भी बल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहां तक माना जाता है कि जो गणतंत्र दिवस का समारोह दिल्ली में आयोजित होता है, राष्ट्रीय समारोह, उसके बाद का ये सबसे महत्वपूर्ण समारोह होता है जो कि समीक्षा के रूप में होता है, बेड़े की समीक्षा के रूप में। राष्ट्रपति द्वारा फ्लीट रिव्यू का ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है और ये 12वां आयोजन इस रूप में है। आईएनएस सुमित्रा कमांडर आशीष मित्तल के निर्देशन में और नेतृत्व में पूरी तरह तैयार है। माननीय राष्ट्रपति महोदय का शुभागमन कुछ ही पलों में यहां होने वाला है। उनके स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और साथ ही नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार उपस्थित हैं उनकी अगवानी और उनके स्वागत के लिए। और माननीय राष्ट्रपति महोदय के वाहनों का काफिला यहां पहुंचेगा। उससे पहले इस समय राज्यपाल आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन जी, उनका आगमन हो रहा है। यहां जो सम्मान गारद उपस्थित है राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रीय सलामी देने के लिए और साथ ही जिसका निरीक्षण माननीय राष्ट्रपति महोदय करेंगे, इसमें 150 नौसैनिक शामिल है। 150 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तभी होता है जब कोई राष्ट्र प्रमुख इस तरह के कार्यक्रम में उसकी उपस्थिति होती है, गरिमामयी उपस्थिति होती है और उसे सलामी दी जाती है और वो निरीक्षण करता है इस तरह के सम्मान गारद का। तो ये सम्मान गारद जो कि यहाँ पर उपस्थित है, सफेद रंग की अपनी पोशाक, वेशभूषा, बहुत ही महत्वपूर्ण नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अभय कुमार सिंह। और इस समय ये आगमन जो यहाँ हो रहा है, अतिथियों का स्वागत अभिनंदन हो रहा है और माननीय राज्यपाल आंध्र प्रदेश जिनका शुभागमन हुआ, विश्वभूषण हरिचंदन जी, माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया है। आईएनएस सुमित्रा जो कि बंदरगाह पर, तट पर पूरी साज सज्जा के साथ इस समय तैयार है यहां से प्रस्थान करने के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन के साथ ही खिली हुई धूप है और यहां तट पर तेज हवाओं के झोंके भी हम महसूस कर सकते हैं। दूर तक लहराता हुआ समंदर का हिस्सा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जल मार्ग है जिसके बीच में, जिसके तट पर ये आईएनएस सुमित्रा खड़ा है और उसके दूसरी तरफ दोनों तरफ के वो दृश्य यहां पर बहुत ही उत्साहित कर रहे हैं, गौरव के भाव से भर रहे हैं क्योंकि इस देश के हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेनाएं और सेनाओं में ये विशेष अवसर जो कि भारतीय नौसेना के लिए है, आज हम सबको गर्व से भर रहा है। इस दिवस की मुझे लगता है कि आकाशवाणी की तरफ से हम सब मिलकर इसको गौरव के साथ अनुभव करें, आत्मसात करें। आप सबको इस अवसर के विशेष शुभकामनाएं। कौशिक। A very good morning, Namaskar. Welcome to the headquarters of the Indian Navy's prestigious Eastern Command, Vishakhapatnam. Vishakhapatnam is hosting the President's Fleet Review for the third time and for the second time consecutively. And we are all expectantly awaiting the arrival of the Honorable President of India and the Supreme Commander of India's Armed Forces, Shri Ramnath Kovind. The Honorable President will be presented with a ceremonial guard of honor on his arrival by 150 sailors. This is indeed a very important day for the Eastern Naval Command because the Eastern Naval Command is a pivotal command for the Indian Navy. And as my fellow commentator Jainendra Singh mentioned earlier, we are aboard Indian naval ship Sumitra, which is the designated presidential yacht for the day. The Sumitra is an indigenously designed naval offshore patrol vessel built at the Goa shipyard. She was commissioned in 2014 and has accomplished several successful missions in her service life. The most notable amongst them was an anti-piracy patrol in the Gulf of Aden in March 2015, and also she was involved in Operation Rahat. And now all the dignitaries, the Union Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the Chief of Naval Staff, Admiral R. Harikumar, the Flag Officer Commanding Chief of the Eastern Command of Indian Navy, Vice Admiral Biswajit
Das Gupta and the Union Defense Secretary are all awaiting the arrival of the presidential motorcade, which is expected in just a short while. And as we say, the royal entry, the regal entry of the motorcade of the Honorable Rashtrapati Ji, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. And this has been done in absolutely brilliant and disciplined manner here at the Naval Dockyard at Vishakhapatnam. Accompanying the presidential yacht today will be two other ships of the Sumitra class, that is the INS Sumedha and INS Savitri. The Honorable Rashtrapati Ji will then sail or embark through the INS Sumitra to take the President's Fleet Review for 2022. And the honorable dignitaries are now all assembled before the embarkation point of INS Sumitra. And we can see that the First Lady of India, Srimati Savita Kovind, has now got down from her vehicle and has been escorted aboard the presidential yacht. And this is indeed a sight for everyone to see, as we have a brilliant morning here at Vishakhapatnam. The waters are azure and calm, and of course we have lovely blue skies here. The First Lady of India, Srimati Savita Kovind, is now coming aboard the INS Sumitra for the President's Fleet Review 2022. And the Honorable Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the Chief of Naval Staff, and the Flag Officer Commanding in Chief of the Eastern Naval Command are awaiting the arrival of Honorable Rashtrapati Ji. As soon as he arrives here, he will be accorded a ceremonial guard of honor, as we mentioned before, by 150 sailors. And this is indeed going to be a very important day in the life of these sailors as they salute their Supreme Commander. आईएनएस सुमित्रा के दाहिनी तरफ वो प्लेटफॉर्म जहां पर सम्मान गारद उपस्थित है अपनी सफेद रंग की पोशाक में, और पी कैप जिसमें काला और सफेद रंग दूर से नजर आता है। ये गौरव भरा क्षण है उनके लिए, और इसीलिए उस गौरव की अभिव्यक्ति उनके शरीर के एक एक अंग से, उनके चेहरों से, उनके आंखों से, उनके शरीर से हो रही है। और यह सम्मान की बात है कि सर्वोच्च कमांडर इस देश के, इन सेनाओं के माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन कुछ ही पलों में बस होने वाला है। आईएनएस सुमित्रा के बिल्कुल केंद्र में स्थित जो स्थल है जिसे टॉर्पीडो डेक कहा जाता है, वहां हमारा कमेंट्री बूथ है, जहां से हम आपको यहां का सारा विवरण जो भी हमारी आंखों के सामने दृष्टिगत है उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पिछले हिस्से में हेलो हैंगर जिसको कहा जाता है, ऊपर का वो हिस्सा पीछे की तरफ जहां पर बहुत सारे ऐसे अतिथि या दूसरे देशों के आए हुए जो विदेशी मेहमान हैं, दूसरे देशों के जो नौसैनिक, नौसेनाओं के मेहमान हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको यहां पर स्थल दिया गया, उनके वो विराजमान है वहां। अगले हिस्से में बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर ब्रिज टॉप जिसे कहा जाता है यहां नौसेना की भाषा में, वहां पर भी विशिष्ट अतिथियों के बैठने का स्थल है। और इसके अलावा जो पीएफआर प्लेटफॉर्म यानी प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू जिसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसका संक्षिप्त रूप है पीएफआर, उस प्लेटफॉर्म पर माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय की धर्मपत्नी तथा माननीय रक्षा मंत्री महोदय, तीनों मुख्य जो तीनों चीफ हैं, प्रमुख हैं सेनाओं के, वे वहां पर विराजमान होंगे। ये अवसर जब यहां पर हम चारों तरफ जहां तक दृष्टि जाती है, प्रेसिडेंशियल फ्लीट के यानी जो तीन मुख्य जहाज हैं, उन तीनों जहाजों पर अतिथियों ने अपना अपना स्थान ले लिया है। सुबह से ही जो गतिविधियां यहां चल रही थी उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं जो किसी भी सैन्य संगठन के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र तो होती हैं, लेकिन उसके बहुत सारे विशेष अभिप्राय भी होते हैं। आज सुबह से ही जब अंधेरा था तब से हम भी यहाँ पर तट पर उपस्थित थे, और इसके अलावा बहुत सारे जो नौसैनिक हैं यहाँ पर उपस्थित अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे थे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। सभी पोतों पर जो कि लंगर डाले हुए हैं, 44 पोत हैं जिनका निरीक्षण, जिनकी समीक्षा आज माननीय राष्ट्रपति महोदय करेंगे, जो कि सर्वोच्च कमांडर हैं सेनाओं के। और वे इसके अलावा फ्लाई पास्ट भी होगा, और भी बहुत सारे कर्तव्य और बहुत सारे आकर्षण हैं इस समीक्षा के अवसर पर, बेड़े की समीक्षा के अवसर पर। लेकिन सभी सुबह सभी पोतों पर जो 44 पोत हैं जिनकी समीक्षा की
जाएगी, उन पर विधिवत राष्ट्रीय ध्वज और नौसेना का ध्वज फहराया जाता है और उसे फहराया गया औपचारिक रूप से यह ध्वजारोहण की प्रक्रिया पूरी की जाती है और सारे पोते पर जो भी लंगर डाले हुए समीक्षा बेड़े में शामिल है उन पर सब पर एक साथ होती है और उसका निर्देश जो दिया जाता है वो सब तक पहुंचता है इस रूप में कि 1 मिनट फॉर कलर्स ये बोला जाता है और उसी 1 मिनट फॉर कलर्स के समय में ये ध्वज जो है नौसेना का भी ध्वज और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज और जो उस बेड़े में शामिल पोत हैं उनका अपना जो निशान है उसको ऊपर पहुंचाया जाता है ताकि दूर से हम देख सके। उस समय विधिवत औपचारिक रूप से जो वर्दी में अधिकारी होते हैं और सैनिक होते हैं वो सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं। तो ये एक बहुत ही विशिष्ट अवसर होता है और ये अवसर और भी विशिष्ट होने जा रहा है क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय के वाहनों का काफिला यहां पहुंचने वाला है। The theme of the 12th President's Fleet Review is Indian Navy 75 years on service of the nation, and we now can see the motorcade of the Honorable President of India, the Supreme Commander of India's Armed Forces, Shri Ram Nath Kovind, arriving here at the Naval Dockyard at Vishakhapatnam, and it has been traditionally led by a gypsy followed by riders of the Indian Navy, and this is indeed a sight to behold. And we can see the presidential limousine being escorted by the security personnel, and the presidential limousine will be arriving just in front of the INS Sumitra in just a few seconds from now, and the welcoming committee comprising of the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, the Chief of Naval Staff Admiral R. Harikumar, and both the Chief of Naval Staff and the Flag Officer Commanding in Chief of the Eastern Naval Command have saluted the Rashtrapati Ji, and Honorable President is now getting off from the presidential limousine, and the Honorable Raksha Mantri is doing a namaskar and welcoming Honorable Rashtrapati Ji to the 12th President's Fleet Review. President is exchanging pleasantries with the dignitaries here and is having a few exchange of conversations with the dignitaries here, and he will now be escorted to the saluting dais, and he is being now escorted to the saluting dais by the officers of the Indian Navy, and the Honorable President has now arrived at the saluting dais. और अब सम्मान गारद द्वारा सलामी। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर अभय कुमार सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय सलामी। सम्मान गारद में सलामी दी, राष्ट्रीय धुन बजाई गई और अब परेड कमांडर जो कि इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अभय कुमार सिंह माननीय राष्ट्रपति महोदय के सलामी मंच के ठीक सामने पहुंचे, टर्न लिया यानी मुड़े सलामी मंच की तरफ और सधे कदमों से नजदीक पहुंचते हुए निकट पहुंचकर वे निवेदन करेंगे राष्ट्रपति महोदय से। सम्मान गारद आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
परेड कमांडर ने निवेदन किया माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि वे इस परेड का सम्मान गारद का निरीक्षण करने की कृपा करें। भारत के राष्ट्रपति और भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर इस समय माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, परेड कमांडर जिनकी अगवानी कर रहे हैं, वे उस परेड के निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं जिसमें 150 नौसैनिक शामिल हैं। गर्व का क्षण है उन सब के लिए। गर्व के साथ, गौरव के साथ सबके सीने तने हुए, चेहरा और मस्तक उठा हुआ, और भारतीय नौसेना का बैंड दल इस समय तैयार है जिसकी धुन पर परेड का निरीक्षण करेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय। ये तट विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का पूर्वी बेड़े का जो तट है इस समय सबके ध्यान का, सबके दृष्टि का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस समय यहां पर राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा का आयोजन, उसका कार्यक्रम जारी है। बैंड की धुन और उस धुन के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय आगे बढ़ते हुए। राष्ट्रपति द्वारा नौसेना बेड़े की समीक्षा की परंपरा स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हो गई थी। श्रोताओं, भारत के गणतंत्र बनने के बाद पहला राष्ट्रपति द्वारा बेड़े की समीक्षा का आयोजन जो है वो 10 अक्टूबर 1953 को हुआ था, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नौसेना बेड़े की समीक्षा की थी। और तब मात्र 30 जहाज उसमें शामिल थे, 6 वायुयान नहीं शामिल थे, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद भारतीय नौसेना जो संयुक्त सेना थी उसके बीच भी बंटवारा हुआ था। तब से अपने कार्यकाल में एक बार राष्ट्रपति नौसैनिक बेड़े की समीक्षा करते हैं, और आज भारतीय नौसेना जो नया भारत है उसके अनुरूप सक्षम है, कुशल है, दक्ष है, सशक्त है, और न सिर्फ देश की सीमाओं की, समुद्री सीमाओं की रक्षा करने को तत्पर और आतुर है, समर्थ है, बल्कि दुनिया भर में जहां भी ऐसी आवश्यकता होती है, मानवीय सहायता की आवश्यकता हो, आपदा के समय सहायता की आवश्यकता या राहत कार्यों की आवश्यकता हो, ऐसे तमाम अवसरों पर भारतीय सेना भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, देश का गौरव बढ़ाते हुए देश का नाम रोशन करती है। और ये नए भारत की एक नई तस्वीर है जो भारतीय नौसेना की गतिविधियों में भी दृष्टिगत होता है। Yes, absolutely. And the Honorable President of India, having inspected the Guard of Honor, is now coming back towards the saluting dais, and he has been escorted by the Flag Officer Commanding in Chief of the Eastern Naval Command, Vice Admiral Biswajit Dasgupta. The Honorable President of India is on his way to board INS Sumitra, the presidential yacht for the day, and he has been cheered loudly by all those who are present on board the presidential yacht, the INS Sumitra. The Honorable Rashtrapati Ji, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, is now ready to take the review of his fleet, and in just a short while from now the INS Sumitra will be sailing towards the south breakwaters, from where the the fleet review will start. And the Honorable President is now arriving at the presidential deck, and he has been welcomed by the Governor of Andhra Pradesh, Shri Bishwabhushan Harichandan, and he will be joining the First Lady and other dignitaries on board the INS Sumitra. The Honorable President of India exchanging a few pleasantries with all those who are present, and the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Harikumar, the Flag Officer Commanding-in-Chief of the Eastern Naval Command, Vice Admiral Biswajit Dasgupta, the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and other dignitaries have also taken their seats on board the INS Sumitra. And in just a few seconds from now, the President's colors, or the presidential insignia, will be on board the INS Sumitra, and 21 guns will boom as the INS Sumitra, captained by Captain Ashish, takes off for the Bay of Bengal. This is indeed a wonderful, wonderful morning here at Vishakhapatnam, and the Honorable President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, is all ready to take the presidential
Fleet Review 2022. And it is indeed a momentous day today, as today is the 21st of February 2022. Today is also the International Day for Mother Languages, and we convey our best wishes to every Indian all across the country to celebrate the diversity of India, the languages of India, and this is a great coincidence that the Presidential Fleet Review is taking place on the International Mother Languages Day. And we will be talking about the President's Fleet Review as the national anthem is being played. इक्कीस तोपों की सलामी, और ये इस बात का इशारा भी है क्योंकि आईएनएस सुमित्रा जो बेड़े का पहला पोत जिस पर माननीय राष्ट्रपति महोदय सवार हैं पीएफआर प्लेटफॉर्म पर, और उसके साथ राष्ट्रीय सलामी इस समय। And the dignitaries of the Indian Armed Forces, all the three service chiefs, the Raksha Mantri, the Raksha Raj Mantri, and several high dignitaries and foreign dignitaries also aboard the INS Sumitra have now set sail for the 12th President's Fleet Review. And as we are moving towards the South Breakwaters, this is indeed a sight to see. Soon we will be joined by the two sister ships of INS Sumitra, the INS Sumedha and INS Savitri. And also there will be fast attack craft Tango 39 and Tango 40, which will be the escorts to INS Sumitra, the presidential yacht. This is the Vishakhapatnam dockyard that we are passing through, which also comes under the purview of the
Eastern Naval Command, and very shortly we shall be coming across towards the Hindustan Shipyards Limited, a flagship company for India's naval ships, which was started way back by the Scindias, and the INS Sumitra is now heading towards the narrow national harbor which leads to the Vishakhapatnam port. And as far as we can see, this is indeed a beautiful sight that so many merchant ships and all are also here in the port today. And this is a piece of history and great memory that they are going to carry from here today. We can now see that the INS Sumitra has picked up pace and is sailing towards the south breakwaters. The Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, the First Lady and other dignitaries are now looking at the surroundings of the Vishakhapatnam Port Trust as we have cleared away from the naval deck, and in front of us we can see the merchant ships. The Honorable Raksha Mantri and other dignitaries are also keenly viewing the surroundings of this beautiful natural harbor. तो इस समय आईएनएस सुमित्रा, जिस पर माननीय राष्ट्रपति महोदय सवार हैं, नौसेना के बेड़े की समीक्षा के लिए आगे बढ़ता हुआ एक जलमार्ग है जो कि नौसेना का जो पूर्वी कमान का हिस्सा है, यानी जो मुख्यालय है वो तट है, उससे निकलकर इस जलमार्ग से होते हुए लगभग 15 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। मुख्य समुद्र में ये आईएनएस सुमित्रा और उसके साथ दूसरे जो पोत हैं वो वहां पहुंचेंगे और वहां से विधिवत जो है ये इसकी यात्रा यानी समीक्षा उसकी आरंभ होगी। ये तीसरा अवसर है जब विशाखापट्टनम में पूर्वी कमान द्वारा इसका संचालन और आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा फ्लीट रिव्यू की, और इससे पहले 2016 में यहां अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का भी आयोजन किया गया था प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू के हिस्से के रूप में, और उससे भी पहले सन 2006 में पहली बार जब यहां विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फ्लीट रिव्यू किया था और वो देश का 9वां फ्लीट रिव्यू था। इस समय 12वां फ्लीट रिव्यू यानी बेड़े की समीक्षा भारतीय नौसेना के वो उसका आयोजन, उसका कार्यक्रम यहां पर जारी है, और इस जलमार्ग में पानी के बीच से होता हुआ ये आईएनएस सुमित्रा जो कि आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति महोदय का पोत, विशेष पोत, भारतीय नौसेना का ये पोत, निर्माण इसका गोवा शिपयार्ड में किया गया था और इसे वर्ष 2014 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। ये वैसे मुख्यतः एक निगरानी पोत है, सर्वेलेंस शिप है जो कि तटीय क्षेत्रों में या समुद्र के भीतर जाकर उसकी निगरानी का काम करती है। 2015 के मार्च महीने में अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी पेट्रोल के दौरान इसे यमन में ऑपरेशन राहत के लिए भेजा गया था जिसमें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसके अलावा सुमित्रा ने उस दौरान 5 राहत अभियानों में 1600 से भी अधिक भारतीय और विदेशी नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला था। जैसा कि आप जानते हैं आज यहां कमांडर आशीष मित्तल आईएनएस सुमित्रा के कमान अधिकारी हैं। वैसे तो सभी जलपोतों पर राष्ट्रीय ध्वज और नौसेना का ध्वज फहराया जाता है, लेकिन यह विशेष अवसर है जब भारत का राजकीय चिन्ह भी इस पर प्रदर्शित किया जाता है, और इसलिए होता है क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय के पोतों का ये बेड़ा है जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय आगे की तरफ बढ़ते हैं। दाहिनी तरफ हमारे याराडा के पहाड़ियां आगे, वैसे यहाँ इस जलमार्ग के दोनों तरफ पहाड़ी क्षेत्र हैं और पहाड़ों पर बहुत सारी चीजें नजर आती है, लेकिन यहाँ पोर्ट ट्रस्ट विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट है, उसका क्षेत्र भी नजर आता है जो कि अपने आप में बहुत ही विशाल एरिया को, विशाल क्षेत्र को अपने आप में समाहित किए हुए है। जो पूर्वी बेड़े का मुख्यालय है जहां से अभी ये यात्रा शुरू हुई है, 1971 में जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, उस दौरान यहां पर सामुद्रिक सैन्य अभियानों या अभ्यासों के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और तब से महत्वपूर्ण तमाम गतिविधियों में इस बेड़े के, इस कमान के सैनिकों ने और यहां के पोतों ने हिस्सा लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में यह बेड़ा अपनी स्वर्ण जयंती भी मना रहा है, और यह भी एक संयोग है कि यह स्वर्णिम विजय वर्ष भी है जब बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। दाहिनी तरफ हिंदुस्तान शिपयार्ड जो कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना शिपयार्ड है, 1941 में इसकी स्थापना हुई थी, निजी क्षेत्र में हुई थी, लेकिन बाद में 1961 में इसे भारत सरकार ने अपने अंतर्गत लिया, और इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी दाहिनी तरफ उसके ठीक बगल से होते हुए आईएनएस सुमित्रा इस जलमार्ग में आगे बढ़ता हुआ।
And as we have left the dry dock and we are sailing towards the south breakwaters, we can see from here that the sister ship of INS Sumitra, that is INS Sumedha, is following us. This national harbour of Vishakhapatnam is between two small hillocks, and the backwaters, if one may call it that, of the Bay of Bengal reach towards the port of Vishakhapatnam. This is a natural harbour, a natural port, and is more than 2 centuries old. And as Jainendra very rightly pointed out, that the victory of India in the 1971 liberation war of Bangladesh was possible because of the pivotal role played by the Navy and, of course, the Eastern Command, which is situated here at Vishakhapatnam. And the Honorable President of India is greeting all those people who are around us between the two hillocks, and there are small boats and boatmen, and they are all doing namaskar to the Honorable President of India, and he is greeting them back. Indeed, a proud moment for these people who are present here today, and this is a memory that every one of them will be taking back. And talking about the Indian Navy, it is one of the finest navies in the world. It is a world-class navy, and it is a blue water navy, as it has reached the between the Indian Ocean and the Indo-Pacific. And now we can see the beautiful hillock here, which comprises of a temple, a mosque, and a church, and of course the tower or the Vishakhapatnam. And this is what India is all about. India is about unity. India is about diversity, and India is about the celebration of all faiths and all languages. And this small hillock which we are leaving behind towards our left is indeed a symbol of the true essence of India. And also this is the spirit of India's armed forces and in the Indian Navy especially. We were talking about the prowess of Indian Navy, and very soon we are going to become a builder's navy, as we are approaching the Amrit Kal of independence, the 100 years of India's independence. In 2047, the Indian Navy will become a world-class fort. And now we have moved away from the Ross Hill, where the three monuments, or rather the three very beautiful temple, mosque and church were situated. We have left that, and in just a short while from now we will be entering into the mouth of the Bay of Bengal. The Indian Navy in the coming decades will have to ensure the India's maritime boundaries and also its exclusive economic zone. And the Indian Navy in its future role is all geared up to be a navy which is a blue water navy, a navy which is going to have the best of technology and the best of equipment. We are also focusing on the indigenization of India's armed forces, and in a very few months from now we shall have the commissioning of the totally indigenously built aircraft carrier, which is going to be the pride of the country and of course the pride of the Indian Navy. We can now see "Welcome to Vishakhapatnam Port Trust" written on the hill to welcome the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind.
आईएनएस सुमित्रा तेज गति होती जा रही है इसकी, क्योंकि मुख्य समुद्र की तरफ आगे बढ़ता हुआ विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जहां से न सिर्फ सामरिक बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी देश और दुनिया के तमाम हिस्सों तक संचालित होती हैं, इस रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। आईएनएस सुमित्रा जिसके कमांडर आशीष मित्तल हैं, इसके पीछे जो राष्ट्रपति के इस बेड़े में शामिल दूसरा पोत आईएनएस सुमेधा जिसके कमांडर सुमित मलिक उसकी कमान संभाल रहे हैं, और आईएनएस सावित्री कमांडर एन रोबी सिंह, ये तीसरा बड़ा पोत इस बेड़े में शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ इस आईएनएस सुमित्रा के ठीक आगे बाईं और दाईं तरफ दो ऐसे फास्ट अटैक क्राफ्ट टैंगो जो कि बहुत तेज गति से हमला करने में सक्षम है जब वे समर के क्षेत्र में होते हैं, वो टैंगो 39 और टैंगो 40। लेफ्टिनेंट चिन्मय अविनाश कुलकर्णी टैंगो 40 का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि कमांड का लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार टैंगो 39 का नेतृत्व कर रहे हैं। और आईएनएस सुमित्रा के ठीक आगे दाहिने और बाईं तरफ से मार्ग दिखाते हुए, स्कॉट करते हुए, अगुवाई करते हुए वे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम धीरे धीरे उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो मुख्य समुद्र का हिस्सा है। आईएनएस सुमित्रा के ठीक अगले हिस्से में बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ हवा के झोंकों के साथ, और माननीय राष्ट्रपति महोदय पीएफआर प्लेटफॉर्म पर वहां पर उपस्थित होकर इस पूरे दृश्य को भाव विभोर होकर देख रहे हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च कमांडर हैं और उनके नेतृत्व में देश की सेनाएं जिस रूप में देश की हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए और प्रगति में अपनी भूमिका निभा रही हैं, निश्चित रूप से किसी भी कमांडर के लिए गर्व की बात होगी। उनके साथ एडमिरल आर हरिकुमार जो कि भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं, वे उपस्थित हैं और उन्हें बीच बीच में विवरण भी इन चीजों का वो साथ के साथ देते जा रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको ये बताएं कि जो राष्ट्रपति द्वारा नौसेना की बेड़े की समीक्षा की जाएगी उसमें मुख्यतः 44 पोतों को शामिल किया गया है, और ये 44 पोत 4 अलग अलग पंक्तियों में, 4 कॉलम्स में यहां समुद्र के बीच में लंगर डाले हुए अपने अपने स्थान पर स्थिर हैं, और समुद्र में ये 11-11 पोत जो है हर पंक्ति में है। पहले चरण में जो समीक्षा माननीय राष्ट्रपति महोदय करेंगे वो 2 पंक्तियों की, 2 कॉलम्स की, जो कि बाईं और दाहिनी तरफ की पंक्तियां हैं, 22 पोतों की समीक्षा उनके द्वारा बारी बारी से की जाएगी। दूसरे चरण में तीसरी पंक्ति और तीसरे चरण में चौथी पंक्ति की समीक्षा वे करेंगे, और इस दौरान फ्लाई पास्ट तथा अन्य बहुत सारे युद्धाभ्यास या जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, राहत के, बचाव कार्यों के, इन सब का प्रदर्शन भी यहां किया जाएगा। नौसेना के मरीन कमांडो मार्कोस की टीम भी बहुत ही हैरतअंगेज कारनामे प्रदर्शित करेगी। जो विवरण अभी तक हमारे पास पहुंचा है उसके आधार पर हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं। आकाशवाणी के हमारे वो श्रोता जो बाद में हमसे जुड़े हों, हम उन्हें बता दें कि विशाखापट्टनम में 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन कार्यक्रम इस समय आगे बढ़ रहा है। ये माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा के लिए आईएनएस सुमित्रा पर सवार होकर समुद्र में मुख्य समुद्र स्थल की तरफ जाते हुए। We have now reached the Bay of Bengal and we can see the beautiful vista of the city of destiny, that is Vishakhapatnam, on our left. This is indeed the city of destiny and also one of the most important cities of the state of Andhra Pradesh. And India has a huge coastline, 7,615 kilometers of it, starting from the tip of the Bay of Bengal in the border of West Bengal and Bangladesh, stretching through the huge waterways of the Bay of Bengal and passing through the states of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and touching the Indian Ocean at Kanyakumari. And the Indian waters then move towards Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat, and Indian territorial waters end almost at the starting of the Gulf, and the Gulf of Kambat on our western coast on the Arabian Sea is our last point of waters. It is indeed a huge maritime boundary that India has, and the Indian Navy is the vanguard of our waters. The Indian Navy is the pride of the nation, and every year we celebrate the Navy Day. As the Honorable Prime Minister mentioned in his address on the Navy Day in 2019,
India was once a great maritime power during the times of the Cholas, and Indian influence reached up to the Strait of Malacca, where Indonesia and Malaysia are situated, and the Indian culture was carried up to that, and also India had an influence in Indochina, a cultural influence. Indian Navy is a maritime force that is capable, that is able, and that is alert, and its domain ranges from the waters of the Indian Ocean and now reaches up to the Pacific in the realm of Indo-Pacific. The Honorable President of India, the Supreme Commander of Indian Armed Forces, Shri Ramnath Kovind, is exchanging pleasantries with the dignitaries present here. And this is, of course, a beautiful day here at Vishakhapatnam. And all the dignitaries are looking at the beautiful azure Bay of Bengal, which, of course, is a tempest-driven bay. Most of the cyclones are occurring here in the Bay of Bengal than any other water. And that is why it is said to be a water which is of a difficult nature. And in these waters lie two of India's most important commands, the Eastern Command here at Vishakhapatnam and the Integrated Command at Andaman and Nicobar Islands. And now the INS Sumitra is making a turn towards the left to reach the South Breakwaters, where she will reach the point where the 44 ships, different vessels of the Indian Navy, the Indian Coast Guard and Merchant Navy are stationed, or as they say, have dropped anchor to greet their president. And as soon as the presidential yacht, that is the INS Savitri, passes through each of these vessels, the seamen on board and their commander will salute the Honorable President with the Rashtrapati Ki Jai chant 3 times. And this is indeed a proud moment for all the sailors, the seamen, and the senior officers of those ships who have dropped anchor off Vishakhapatnam in the Bay of Bengal. PFR 2022 यानी ये 12वां प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का जो आयोजन और कार्यक्रम इस समय चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में आईएनएस सुमित्रा जो पहुंच चुकी है, माननीय राष्ट्रपति महोदय इस पोत में सवार हैं और उनके पोत के अन्य जो दूसरे इस बेड़े में शामिल पोत है आईएनएस सुमेधा और सावित्री, जो फर्स्ट अटैक क्राफ्ट टैंगो 39 और टैंगो 40 थे, जो कि आगे आगे बाईं और दाईं तरफ चल रहे थे आईएनएस सुमित्रा के, उन्होंने वापस बाईं तरफ टर्न लेकर बिल्कुल वो साइड में चले गए हैं, अपने अपनी दोनों तरफ से साइड से टर्न लेते हुए, और वे उसके पीछे साइड में एक तरफ, दोनों एक एक तरफ वहां से साथ में चलते हुए। श्रोताओं, आपको याद होगा कि 75वें वर्ष में जो भारतीय नेवी यानी भारतीय नौसेना के जो देश के लिए उसने सेवाएं दी हैं, उसके उपलक्ष्य में जो विशेष एक लोगो भी उसको जारी किया गया था दिल्ली में, जो कि समुद्र में भारतीय नौसेना की क्षमता के जो आयाम हैं अलग अलग, और आयाम इस रूप में है कि चाहे वो हवा हो, चाहे वो समुद्री सतह हो या समुद्र की गहराई हो, हर क्षेत्र में, हर आयाम पर, हर स्तर पर भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता का, अपने कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और आज उसी प्रदर्शन के अनुरूप यहां पर उसके बेड़े की समीक्षा माननीय राष्ट्रपति महोदय करेंगे। बंगाल की खाड़ी में अब दूर दूर तक हमें जल ही जल नजर आ रहा है और उसके साथ समुद्र की उठती लहरें भी नजर आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूर से तट जो हमसे दूर होता जा रहा है वो है विशाखापट्टनम का वो खूबसूरत शहर, जिसे डेस्टिनी शहर, भाग्य के भाग्योदय वाले शहर के रूप में भी जिसे जाना जाता है, सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाना जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा विशाखापट्टनम का शहर है, जो अपने भौगोलिक स्थिति के कारण अपना एक विशेष महत्व भी रखता है। इस समय जो कमांड के लिए धीरे धीरे निर्देशन किए जा रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय की जय का ये घोष हमें सुनाई दे रहा है, वो आईएनएस तरंगे
3 बार राष्ट्रपति की जय यानी इस समीक्षा बेड़े में हमारी बाईं तरफ जो पहला पोत है वो आईएनएस तरंगिणी का है। रंग बिरंगे झंडियों से इसे सजाया गया है। दरअसल ये फ्लैग्स जो है वो भी इसके भी अपने अपने मायने हैं, लेकिन अग्रभाग में राष्ट्रीय ध्वज है और पृष्ठभाग में नौसेना का ध्वज है। और इस पोत में 3 ऊंचे मास्ट का जो स्तंभ है, उन स्तंभों पर अलग अलग ऊंचाई पर लगे प्लेटफॉर्म पर नौसैनिक और कैडेट्स बहुत ही जोश के साथ यहां से घोष कर रहे थे, राष्ट्रपति की जय, राष्ट्रपति की जय, राष्ट्रपति की जय, कमांडर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में। Yes, indeed. A proud moment for Captain Praveen Kumar and his sailors aboard the INS Tarangini. INS Tarangini is the first sail training ship of the STS of the Indian Navy. She carries 20 sails and is 54 meters in length. It has covered more than 1,88,000 nautical miles in its 15 years, and we can now see also the beautiful sails of the INS Tarangini as we who are situated on the torpedo booth is just passing through it. And the next ship that we are coming here is the INS Jyoti. INS Jyoti is also a ship that is stationed here at Vishakhapatnam for this 12th Presidential Fleet Review, and it also plays an important role in training our naval men. It is based at Vishakhapatnam and is also the lifeline of the Eastern Fleet, ensuring sustainability and efficiency of the fleet ships of the Navy at sea. INS Jyoti is commanded by Captain M.B. Das. What a beautiful sight here, and we are just moving in a direction towards northeast of the Vishakhapatnam coast, and the azure blue waters are slightly turning towards blue here as we have reached about 15 nautical miles of Vishakhapatnam. The city of Vishakhapatnam is now located towards our right, and this is a visual delight. We are on the water. Towards our left, the skyline of Vizag, and next we have this beautiful ship. INS सुदर्शन जो कि हमारी बाईं तरफ है, ये भी एक विशेष पोत है और इस समय वहां से राष्ट्रपति की जय का घोष सुनाई दे रहा है। इसे भी भारतीय नौसेना के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस तरंगिणी की तरह ही निर्मित और तैयार किया गया है। 1997 में इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और सुदर्शनी का अर्थ ही सुंदर स्त्री, यानी इसकी सुंदर साज सज्जा अपने नाम को सार्थक करती हुई और दक्षिणी कमान का यह हिस्सा है और इसका होम पोर्ट कोच्चि है। इस पोत की लंबाई लगभग 54 मीटर और ऊंचाई लगभग 35 मीटर। ये सलामी, ये अभिनंदन और जय का घोष माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए, यानी सर्वोच्च कमांडर के लिए। अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अभिनंदन को स्वीकार किया है, निरीक्षण किया है, समीक्षा की है इस प्रदर्शन की, और इस प्रदर्शन को उनके चेहरे की भावभंगिमा और साथ में माननीय रक्षा मंत्री वे उपस्थित हैं। और अगला पोत जिसके तट पर एक किनारे जो कि आईएनएस सुमित्रा की तरफ दिखाई दे रहा है, वहां पर नौसैनिक तैयार हैं जय घोष के लिए, जिसका नंबर L51 है और ये है आईएनएस गज। राष्ट्रपति की जय का घोष अल्फा 51, जिसका नंबर आईएनएस गज कमांड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अंकुश वर्मा। आईएनएस गज सन 2002 में नौसेना में इसे शामिल किया गया था और ये पोत यहीं का यानी पूर्वी कमान का ही हिस्सा है। ये इसे टग बोट कहते हैं। टग बोट यानी ऐसा समुद्री पोत जो दूसरे पोतों को खींचने या धकेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेष तौर पर यह पोत भीड़ भाड़ वाले बंदरगाहों से जब किसी तेज गति के या बड़े पोत को गुजरना होता है, ऐसे में इसकी मदद की जाती है। And after INS Gaj, we are going to approach the indigenously built landing craft utility with number
51. These ships are extensively utilized in amphibious warfare for beaching and transport. And it is the corvette, which is P-61 INS Kora. INS Kora is commanded by Commander Pradeep Kumar, and INS Kora, as they say, is all dressed up with beautiful flags. आईएनएस अस्त्रधारणी, जिसका अल्फा नंबर 61 कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर अंकित कुमार सिंह, उस पर सवार नौसैनिकों ने राष्ट्रपति महोदय का जय घोष किया। ये दरअसल एक ऐसा पोत है जो कि रिकवरी पोत के रूप में जाना जाता है। अस्त्रधारणी देश में ही निर्मित किया गया है। 6 अक्टूबर 2015 को भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था। ये पोत And this is an indigenous ship which Jainendra ji was talking about. It is a catamaran-hulled torpedo launch and recovery vessel, and it is very distinguished in its service and has helped in naval operations and support to engineers research and development. It was commanded by Lieutenant Commander Ankit Kumar Singh. And now we are passing through the INS Karch. Karch is commanded by Commander Adit Patnaik. It is a Kora-class missile corvette. Corvette is a small warship, and the Indian naval fleet consists of the corvettes, the frigates, and the destroyer. और हमारी बाईं तरफ यानी आईएनएस सुमित्रा के बाईं तरफ जो पोत नजर आ रहा है वो है आईएनएस मकर, जिसका नंबर है J31। ये नंबर दरअसल यहाँ नौसैनिकों के लिए पहचान के लिए आवश्यक है, जिस पर नाम नहीं लिखे होते हैं। नंबर से अंदाजा लग सकता है कि ये किस जगह का पोत है या इसका नंबर क्या है। इसके कमान अधिकारी कमांडर साहिल सागोज। इसे नौसेना में 21 सितंबर 2012 को कमीशन किया गया था। कारवाड़ स्थित सी बोर्ड नेवल बेस के साथ इसे संबद्ध किया गया है। चूंकि ये सर्वेक्षण इसलिए बहुत सारे इसमें आधुनिक उपकरण लगे हैं और हाइड्रोग्राफिक सर्वेज इसके माध्यम से किए जाते हैं और बहुत ही उपयोगी ये अपने आप में। And this is indeed a beautiful morning here as we approach the INS Kulish. The Kulish is also a Kora-class missile corvette, and its number is P-63. Kulish is commanded by Commander Abhishek Yadav. And we also are seeing that many of the dignitaries have come around to the torpedo section of the INS Savitri and are enjoying these very moments. अगला पोत हमारी बाईं तरफ भारतीय नौसेना का अनुसंधान पोत है और इसका नाम है सागर अन्वेषिका। इसके कमान अधिकारी हैं कैप्टन विनोद कुमार। दरअसल ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पोत है, जिसका संचालन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है और ये CRV यानी कोस्टल रिसर्च व्हीकल कैटेगरी का पोत है। चेन्नई बंदरगाह पर फिलहाल वर्तमान में ये तैनात है और वहीं पर इसके अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। समुद्री तट हो या तट से दूर के जो समुद्र के क्षेत्र हैं वहां शोध कार्यों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के पास ऐसे कुल 6 रिसर्च जलपोत हैं। सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मनुषा, सागर तारा और ये यानी सागर अन्वेषिका। The next ship is an Indian Coast Guard ship with the number 14, and the sailors and seamen on board the Coast Guard ship Sayadri chanted Rashtrapati Ki Jai 3 times. Sayadri is based at Kochi and is commanded by Commandant Makand Gujar. The Coast Guard plays a very important role in keeping our waters free from piracy, smuggling, and other such nefarious activities. The Indian Coast Guard is also displaying its vessels here at the 12th President's Fleet Review.
भारतीय तटरक्षक बल के 6 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स में से सारथी जो है वो एक है और सारथी पर उपस्थित जो नौसैनिक हैं वे अपनी सफेद वेशभूषा और हाथों में अपना कैप लेकर हवा में लहराते हुए राष्ट्रपति की जय का घोष कर रहे थे। और चूंकि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ वहीं पर इसका निर्माण किया गया है, लगभग 105 मीटर की इसकी लंबाई है। बहुत ही अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार के उपकरण इसमें डाले गए हैं, सेंसर और मशीनें इसमें लगी हुई हैं और इस तरह से यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है। भारतीय तटरक्षक बल का एक और पोत जो है वो ICGS वरद, जिसका नंबर जो कि दूर से दिखता है वो 40 है और ये विक्रम श्रेणी का पेट्रोल वेसल है जहां से जयघोष की ध्वनि आ रही है। And we have just crossed the Varad and we are now going to see the INS Satluj, whose number is J17, a Sandhaya class survey vessel based in Kochi. INS Satluj is commanded by Captain A. Muralidhar, and the Satluj has played a important role in many operations in the waters of the Bay of Bengal, of the Arabian Sea, and of course of the Indian Ocean. And it was also involved in many search and rescue operations, and is one of the important ships of the INS, the Indian Navy. And we see another Coast Guard ship, number 15. शौणक इसका नाम है, कौशिक, और शौणक जो है भारतीय तटरक्षक बल का पोत है जिसका नंबर आपने बताया कि 15 नंबर है। ये विशाखापट्टनम में ही स्थित है। वहां से राष्ट्रपति की जय का घोष, उसकी ध्वनि आप तक श्रोताओं पहुंच रही थी। ये समर्थ श्रेणी का जो पेट्रोल वेसल है उसमें से एक है जो तट से दूर जो समुद्री क्षेत्र है उसमें गहराई में जाकर निगरानी करने या अन्य कार्यों को पूरा करने में बहुत ही सक्षम है। ICGS शौणक के कमान अधिकारी हैं DIG अनुपम राय। इस जलपोत को गोवा में पिछले साल फरवरी के महीने में कमीशन किया गया था। तटरक्षक बल के बेड़े में इसमें शामिल होने से बेड़े की क्षमता में बहुत विस्तार हुआ है और देश की जो विशाल समुद्री तट हैं या तटों के अंदर जाकर गहरे समुद्र तक के क्षेत्रों में जो सुरक्षा के या अन्य हित हैं भारत देश के साथ जुड़े हुए, उसकी संरक्षा, उसकी सुरक्षा का दायित्व इंडियन कोस्ट गार्ड यानी जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके हाथ में। शौणक उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ। Yes, that is right. The Indian Coast Guard Shaunak plays a very important role in keeping India's maritime waters safe, and also the Indian commercial waters, which are the most important lifeline for the supply of energy. And coming up in just a short while from now is the Navy's INS Nirupak 1-4. Apart from its primary role of mapping the oceans and the coastline, these ships have also been instrumental in providing relief material to far-flung island territories of the Andaman and Nicobar group of islands, and it played a very great role during the tsunami in 2005. INS Nirupak is commanded by Captain Ramkumar Bhaskar Menon. श्रोताओं, 44 पोतों की जो समीक्षा आज भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जा रही है, उसमें आरंभ के चरण में जो बाईं और दाहिनी तरफ के जो पोत हैं उनकी समीक्षा की जा रही है और उस क्रम में बाईं तरफ का जो अंतिम पोत है वो समीक्षा बेड़े के पहले कॉलम का वो है SCI साबरमती यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये साबरमती पोत है। इसके कमान अधिकारी हैं कैप्टन विजय सिंह। ये भारतीय जहाजरानी निगम, जैसे कि मैंने बताया कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पोत, जिसमें तट से दूर समुद्र में आपूर्ति का कार्य, जिस तरह की आवश्यकता होती है उस तरह की वस्तुओं का या जो भी आयुध यानी हथियारों के इस्तेमाल की बात है, फ्यूल यानी ईंधन के वहां पर पहुंचाने की बात है, या राहत या बचाव के अवसर पर इससे बहुत सारी सहायता कार्य जो है वहां संपन्न किए जाते हैं। तो इस तरह से SCI साबरमती का ये पोत, अंतिम पोत बाईं तरफ का समीक्षा बेड़े में, और उसके बाद ये अंतिम पोत जो दाहिनी तरफ है उसका विवरण भी आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि पहले लेग यानी पहले चरण की जो समीक्षा है वो वहां संपन्न होगी जहां दूसरी पंक्ति में दाहिनी तरफ है स्वर्ण सिंधु, और वो भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही पोत है। And we can also inform our listeners that all the dignitaries on board the presidential yacht, the INS Sumitra, are
enjoying this beautiful day here. It is almost 10 in the morning, but of course looks rather sunny here in the high seas. And now we can also see the beautiful small yachts that have covered around the Bay of Bengal to welcoming the President of India with their blue, red and white sails. This is a beautiful sight here indeed, and this talks about the greatness of the Indian Navy, who also have allowed the participants to come and salute the Supreme Commander of the Armed Forces as well as the President of India. The Indian Navy's showcase PFR 2022 is a riot of colors here today at Vishakhapatnam, and the Honorable President of India has stood up and is receiving the salute from these small yachts that are at the end of the first column of the President's Fleet Review 2022. And we can now feel here on the torpedo deck a slight turn towards our right as the INS Sumitra, the presidential yacht, is moving towards the second round of the Presidential Fleet Review 2022. As we mentioned at the beginning of this broadcast, that there are 44 ships and they are placed in 4 rows, and different ships belonging to the Indian Navy, the Indian Coast Guard, the Merchant Navy, and of course this beautiful yacht that we saw just now. And as the INS Sumitra is taking a turn towards the right and will now take a U-turn to begin the second leg of the Presidential Fleet Review 2022, we can see the Honorable Raksha Mantri is having a conversation with Admiral R. Harikumar, the Chief of the Naval Staff, and we can also see the hillocks of Vishakhapatnam about 20 nautical miles away from where we are stationed. बहुत नजदीक तक, निकट तक हम उस दृश्य के पहुंचे हैं जिसका विवरण अभी कौशिक आप तक पहुंचा रहे थे। यानी रंगीन पाल नौकाएं जो सेल बोट्स होती हैं, दूर दूर तक दिखता, दूर दूर तक फैला हुआ ये नीला समुद्र और समुद्र में बिल्कुल निकट 3 रंगों की पाल नौकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को सलामी देने के लिए, और उस बेड़े में शामिल है जिसका निरीक्षण, जिसकी समीक्षा आज माननीय राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। ये तीनों तरह की पाल नौकाएं बहुत सुदूर के क्षेत्रों से यहाँ इस अवसर के लिए लेकर आई गई हैं, जिसमें 3 तरह की पाल नौकाएं हैं, 2 लेजर बाय 6 यानी 6 एंटरप्राइज क्लास की और 6 ओशियन सेलिंग बोट है जो यहाँ पर हमारी बाईं तरफ नजर आ रही हैं। बहुत ही निकट से हवा के झोंकों के साथ उनके पाल जो है वो लहराते हैं, वो भी इस तरह से समंदर में लहरें पानी की हमें दिखाई देती हैं, वैसे ही समंदर की सतह पर रंग बिरंगे ये पाल जो है हवा के झोंकों के साथ लहराते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आरंभ में नीले रंग के पाल वाली नौकाएं हैं, बीच में लाल और सफेद रंग की पाल है उसमें, और बिल्कुल किनारे थोड़े बड़े आकार के हैं वो सफेद रंग की पाल की ये नौकाएं हैं जो कि 6 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये वो पाल नौकाएं हैं, सेल बोट्स हैं, जो किसी भी समुद्री क्षेत्र में जा सकती हैं, वहां पर सेलिंग कर सकती हैं, यानी नौकायन कर सकती हैं। और इस रूप में ये भले बहुत विशाल आकृति के ना हो, लेकिन इनकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये विशेष तौर पर जो इस तरह के सेलिंग जो अभियान चलाए जाते हैं, मिशन चलाए जाते हैं, उसमें भी ये देश के और दुनिया के तमाम हिस्सों में अलग अलग तरह के समुद्र की अलग अलग प्रकृति होती है कौशिक, लेकिन फिर भी ये इन नौकाओं की ये खास बात है कि हर तरह के समुद्र में जिसकी जो नेचर होती है उसके अनुरूप अपने को ढालकर अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को और जो भी इनका आयोजन होता है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो रंगीन पाल नौकाएं भी एक कलर, एक रंग जोड़ रही हैं इस समीक्षा बेड़े के आयोजन में, जबकि जो कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद इस समय INS सुमित्रा में सवार होकर समुद्र की लहरों के बीच से आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। And towards our right from where we are stationed here at the torpedo deck, Jainendra ji and myself, we are looking at the vast waters, the vast maritime waters of India.
And so far as we can see up to the horizon, we do not seem to see any spot of land. And what a day it is in the life of a sailor to be away from their near and dear ones, yet to protect us, to keep us at our homes. And now we begin the second leg of the President's fleet review, and we are now going to see the INS Ghadial. It is a ship that is with the number L23. It is a landing ship with a large tank based at INS Vishakhapatnam. INS Ghadial is a Magar class ship. And we can now hear the shouts of Rashtrapati Ki Jai. The Magar are amphibious warfare vessels, and it has a full load of 5,665 tons. It is 390 feet in length with a range of 3,500 nautical miles at a speed of 14 knots, and it can accommodate up to 500 sailors. और इस आईएनएस घड़ियाल के बाद इस समीक्षा बेड़े में शामिल जो अगला पोत है वो आईएनएस केसरी है। आईएनएस केसरी एक बहुत ही विशाल लैंडिंग शिप टैंक है जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित एकीकृत कमान का हिस्सा है। इन पोतों ने भारतीय नौसेना द्वारा की जाने वाली जो राहत और बचाव कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संकट में फंसे लोगों को सहायता पहुंचाने के साथ साथ लोगों का जीवन भी बचाया है। आईएनएस केसरी के कमान अधिकारी कमांडर आशीष दत्ता के नेतृत्व में सलामी देते हुए राष्ट्रपति के जय घोष के साथ आगे बढ़ते हुए भारतीय नौसेना पोत केसरी के कमान अधिकारी कमांडर आशीष दत्ता। And we have just gone past Lima 15, that is INS Kesari, a large landing ship tank based at Port Blair. These vessels have provided humanitarian assistance during times of disaster. And coming up next is the diving support vessel, INS Nirikshak, and number 15. The next Nirikshak was built at the Mudground Docks Limited and can also function as a submarine rescue vessel. Divers from the Indian Navy, Janendraji, hold the national record for the deepest dive of 257 meters, which was undertaken from INS Nirikshak on the 9th of January 2013. INS Nirikshak is being commanded by Commander Mohammad Ikram. राष्ट्रपति के जय घोष 3 बार करके राष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन किया और अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ आईएनएस सुमित्रा इस बेड़े में शामिल अगले पोत के निरीक्षण के लिए जब माननीय राष्ट्रपति महोदय उसकी समीक्षा करेंगे। अगला पोत इस तीसरी पंक्ति का है आईएनएस सुकन्या। इसका पापा नंबर 50, पेनेंट नंबर जो है वो 50 है। कमान अधिकारी कमांडर अमित कुमार। अपनी श्रेणी में ये पहला पोत है और आमतौर पर तटों से दूर जो समुद्र में क्षेत्र होता है वहां पर इसकी तैनाती की जाती है और इसका जो मुख्य दायित्व है वो बंदरगाहों की रक्षा करना, ऑफ शोर यानी समुद्र तटों से दूर के जो समुद्री क्षेत्र हैं वहां जो प्रतिष्ठान है, जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी सुरक्षा करना और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है उस क्षेत्र में भी देश के हितों की रक्षा करना। आज इसके कमान अधिकारी कमांडर अमित कुमार राष्ट्रपति महोदय की जय, राष्ट्रपति की जय, राष्ट्रपति की जय का घोष। माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने स्थान पर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, सलामी स्वीकार करते हुए। It is indeed a sight to see and sounds to behold on the waters of the Bay of Bengal. Indian sailors and their officers saying Rashtrapati Ki Jai in unison 3 times. Coming up next to the left of us is offshore patrol vessel INS Sujata with number P56. This ship is a cadet training ship of the 1st Training Squadron based at Kochi. Kochi also happens to be the Southern Naval Command's headquarters. INS Sujata is commanded by Commander Randeep Ghosh. And we also heard the loud cheers of the dignitaries who are on board in INS Sumitra, and they are also having
a wonderful time here in the high seas. Of course, a very sunny day, very sunny on the high seas of Vishakhapatnam. But every person present on this vessel are excited and partaking this moment which they will carry forever. और अब अपने वर्ग का एक और पहला पोत आईएनएस कमोरता शामिल है इस बेड़े में, जिसकी समीक्षा राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और ये हमारी बाईं तरफ स्थित है और इसमें दरअसल पनडुब्बी रोधी ये पोत है, जिसका डिजाइन भारत में ही नौसेना के डिजाइनरों द्वारा तैयार किया गया और इसका निर्माण भी यहीं यानी भारत में ही हुआ, स्वदेशी रूप से इसका निर्माण हुआ। आईएनएस कमोरता के कमान अधिकारी कमांडर कपिल मोहन इस पोत में अलग अलग जो स्तर है वहां पर आईएनएस सुमित्रा की तरफ मुंह करके नौसैनिक अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी कैप जो है हाथों में लिए राष्ट्रपति के जय घोष करके और अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ आईएनएस सुमित्रा का ये पोत राष्ट्रपति महोदय जिस पर सवार हैं। हवा का तेज झोंका है, कमेंट्री के बूथ में इस बात का ज्यादा एहसास शायद ना होता हो, लेकिन बाहर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो आभास है, उसके साथ हम महसूस कर सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही है। कमोरता श्रेणी का एक और पोत है इस बेड़े में शामिल, जिसका नाम है आईएनएस कदमत, जिसकी जहां से जय घोष की ये ध्वनि हम तक पहुंच रही है। And the Kadmat and Kamorta are the same class of ships now, and as we are now approaching another important platform of the Kamorta class, the INS Kavarati, and the sailors here, as you rightly pointed out, Janendra, are holding their caps, their sailing caps in their right hands in salute to the Honorable Rashtrapati Ji. The Kavarati is an anti-submarine warfare corvette and is built with carbon composite superstructure, and it boasts of stealth capability, and it is of course a very environment friendly naval warship, a corvette. INS Kavarati is commanded by Commander Chandrakant Kothari. तीसरा कॉलम यानी तीसरी पंक्ति की समीक्षा इस समय राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जा रही है नौसेना के बेड़े की समीक्षा के इस आयोजन में। और अब आईएनएस सुमित्रा आगे बढ़ता हुआ, गति तेज है और इस तेज गति के साथ हवा के झोंकों का टकराना अपने आप में एक अलग तरह की अनुभूति तो देता है, लेकिन दूर दूर तक नीला समंदर फैला हुआ, पानी की लहरें और साथ में राष्ट्रपति की जय का घोष जो कि इस समय आईएनएस तीर से आ रहा है। आईएनएस तीर जिसका निर्माण मझगांव डॉक्स लिमिटेड में हुआ, इसके कमान अधिकारी कैप्टन आफ्ताब अहमद खां। ये मुख्यतः एक प्रशिक्षण पोत है जिसमें ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद कैडेट जो है एक बहादुर, कुशल और अनुशासित सैनिक के रूप बनकर निकलता है और देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। ये अपने आप में इस तरह का विशिष्ट पोत। And now we are passing by INS Brahmaputra F31, the first of the Brahmaputra class frigates. Frigates are medium-sized warships, and these ships are also equipped with state-of-the-art ammunition, including the long-range surface-to-air missile. And we can hear the beautiful sounds here as the wind is gusting through. These sounds we do seldom hear on land. Yet the enthusiasm of our sailors and other ranks on INS Brahmaputra also defeated the gusts of wind with their shouts of Rashtrapati Ki Jai. Indeed, a proud moment for every one of us Indians today as we partake of the President's Fleet Review 2022. And it's almost 10 past 10 in the morning of the high seas of Vishakhapatnam, but it appears to be almost dead of afternoon here in the high seas, and the wind is blowing very strongly. The waters are calm, and the INS Sumitra is sailing at a lovely speed of about 14 knots.
आईएनएस ब्रह्मपुत्र और उसके बाद अगले पोत की तरफ बढ़ता हुआ आईएनएस सुमित्रा। लेकिन इस बीच ये जानकर किसी भी देशवासी को गौरव की अनुभूति होगी कि भारतीय नौसेना अपने आप में कितनी सक्षम है, सशक्त है। इस समय अगली पोत से ध्वनि आती हुई राष्ट्रपति की जय के घोष के रूप में। आईएनएस शक्ति के निकट जब पहुंचे तो राष्ट्रपति की जय का घोष। और वैसे तो आईएनएस शक्ति बहुत तरह की भूमिकाएं निभा सकता है, पर इसकी एक बहुत ही विशेष भूमिका होती है। समुद्र में पोतों को जब ईंधन पहुंचाना हो, गोला बारूद या कलपुर्जे या जो रोजमर्रा की चीजों की आवश्यकता होती है, वो वहां तक पहुंचाने का कार्य आईएनएस शक्ति द्वारा किया जाता है। और इसी भूमिका की वजह से जो अन्य पोत हैं वो लंबे समय तक समुद्र में रहते हुए तैनात रहते हैं, अपना काम पूरा कर पाते हैं। आईएनएस शक्ति के कमान अधिकारी कैप्टन सचिव विजय शिंदे, जिनके नेतृत्व में आईएनएस सुमित्रा की तरफ मुंह करके अपने हाथों में कैप हवा में अभी भी राष्ट्रपति की जय के घोष के बाद भी हवा में ही जहां उनका हाथ था वहीं पर टिका हुआ है, वहीं पर रुका हुआ है। उसके अग्रभाग में राष्ट्रीय ध्वज लहरा है, जबकि पीछे के हिस्से में भारतीय नौसेना का ध्वज अपनी एक विशेष पहचान आईएनएस शक्ति की, उसके आगे निकलता हुआ आईएनएस सुमित्रा। And after this INS Sumitra, we are also looking at various other ships this morning belonging to the Indian Navy, and you can also hear the gusts of wind which are blowing fiercely here today at the INS Sumitra, which is off the coast of Vishakhapatnam, and I think we have come almost 20 to 25 nautical miles off Vishakhapatnam into the high seas of the Bay of Bengal. And we are also going to see some special performances by the airborne team of the Indian Navy in just a short while from now, as we pass AB-6, another ship of the Indian Navy dressed with its regalia of the Indian flag, the naval flag, and all other colors. The officers and men are on the starboard deck, as they say, the right deck of AB-6. And very soon we shall have a demonstration of the special राष्ट्रपति की जय का घोष। दूर से सफेद आकृतियां छोटे छोटे बिंदु से नजर आते हैं जो पोतों पर नौसैनिक हैं, लेकिन उनकी ध्वनि जो जोश के साथ जब यहां पहुंचती है, बिना किसी माध्यम के पहुंचती है, सिर्फ समंदर की सतह से होती हुई हवा की झोंकों के साथ यहां तक आती है, तो हर एक को जोश से भर देती है, गौरव के भाव से भर देती है। क्योंकि हमारे ये नौसैनिक बहुत ही विपरीत, प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य को अंजाम देते हैं, उसको पूरा करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ये जो पोतों पर बहुत तरह के अलग अलग रंग के फ्लैग्स लगे हुए हैं, दरअसल इनका भी कौशिक विशेष अर्थ है, अभिप्राय है। क्योंकि जब कोई पोत कोई विशिष्ट कार्य को अंजाम दे रहा होता है तो एक विशेष तरह का ध्वज उसके ऊपर लहराया जाता है, वो फ्लैग उसके ऊपर लहराया जाता है, ताकि आसपास के जो पोत हैं या वेसल्स हैं या जो भी और गतिविधियां चल रही हैं उन सबको ये पता चल जाए कि किस तरह की गतिविधि इस पोत के अंदर चल रही है। यानी उसमें ईंधन भरा जा रहा है, उसकी मेंटेनेंस या रिपेयर का काम हो रहा है, या कोई और कार्य वहां पर संपन्न किया जा रहा है। ये तीसरा कॉलम जिसकी समीक्षा करने के बाद आईएनएस सुमित्रा तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ, गति का अंदाजा हमें इस बात से लगता है कि जो समंदर की लहरें हैं जब इससे टकराती हैं तो टकरा कर वो और दूर तक छिटकती है। और एक बार फिर से राष्ट्रपति की जय का घोष एक और उस पोत से जो कि इस बेड़े में समीक्षा के लिए शामिल है। विशाल आकृति का ये पोत जो हमारी बाईं तरफ स्थित है और वहां से उसके अलग अलग सतहों पर हम देख पा रहे हैं वे नौसैनिक जो जय घोष कर रहे थे। Yes, absolutely, and we can now see
coming towards our commentary booth. On the torpedo deck is an advanced light helicopter of the aviation arm of Indian Navy, and it is going to perform the special rescue operation here of the Bay of Bengal. It is indeed a sight to see. The chopper almost about 10 feet off the water, a dangerous maneuver indeed. The chopper is flying so down, we can see the gusts of water hitting its rotators, but yet now it is under 10 feet, just above water, and they are going to show a special maneuver called the 10-10 method of deploying rescue divers. And a diver is going to jump, and he has already jumped now into the water. Indeed, a important maneuver, and it needs nerves of steel and skill. And now we can see red smoke coming out of where the diver had landed, and the chopper has flown off a little distance away and is going to come back as the INS Sumitra is taking a turn towards the left, and we can now see the chopper coming back for the rescue operation to take away the sailor along with the person to be rescued. The sailor is swimming towards the chopper with the person who needs to be rescued. And once again, the advanced light helicopter hovering over the Bay of Bengal, just about 15 feet, dropping the safety basket. We can now see the safety basket that has been dropped from the advanced light helicopter. Really, it's a test of a man's skill against nature. This is something which no ordinary mortal can ever afford to do. And the basket is getting lowered into the water. It has been lowered, and the rescue person, the rescue sailor, has grabbed it and has put the person who was in the water onto the basket, and he is also clutching at the basket to get in himself. And this can be done by people with great skill. So these are the operations that make what the Indian Navy is. This makes Indian Navy stand out. And in just a short while, the persons from, yes, we can see them, the rescuer and the rescued, both been taken away by the helicopter. They're just above the surface of the Bay of Bengal, the waters, and these are very, very deep waters indeed. And now we can see that the both rescuer and the rescued are being pulled away by the advanced light helicopter. Indeed, a sight to see, a sight to behold, unbelievable yet true. We can now see that the two persons are almost reached the advanced light helicopter, and they will be pulled in by the team of rescue personnel. And yes, we can see that they are inside the chopper safely, and the advanced light helicopter is now flying away from us. This spectacle is being watched with awe by everyone who are present aboard the INS Sumitra. The President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, the First Lady, the three service chiefs, the Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the Honorable Governor of Andhra Pradesh, and all other dignitaries are applauding this wonderful, wonderful demonstration of special rescue by the advanced light helicopter.
that the indigenous countries on board. और ये हैरतअंगेज रोमांचक प्रदर्शन जो यहाँ पर समुद्र के सतह पर और समुद्र के ऊपर के आसमान में अंजाम दिया गया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर द्वारा कॉम्बैट जंप का ये प्रदर्शन, ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK1 जो कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 322 322 का हिस्सा है और कोच्चि से इसे संचालित किया जाता है। इस स्क्वाड्रन को बचाव राहत कार्यों के अभियानों की वजह से इसे खास तौर पर गार्जियन के रूप में जाना जाता है। और अब चौथा कॉलम यानी चौथी पंक्ति की समीक्षा यहां आरंभ होने जा रही है और इस समीक्षा बेड़े में चौथे कॉलम का जो पहला पोत है वो है INS विशाखापट्टनम। श्रोताओं, इसका पेनेंट नंबर जो यहां से दिखता है वो है 66 और आज भारत पोत या जहाजरानी के क्षेत्र में एक निर्माता के रूप में ये देश इतनी तेजी से उभरा है, उस पर हम सबको गर्व है और इसीलिए ये INS विशाखापट्टनम भी उसी का एक उदाहरण है क्योंकि ये स्वदेश में ही निर्मित है। वहां से राष्ट्रपति की जय का घोष माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने स्थान पर खड़े होकर सलामी या अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनके साथ नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार भी खड़े। INS विशाखापट्टनम इस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का बहुत ही खूबसूरत जीता जागता प्रमाण है। ये पोत अत्याधुनिक हथियारों से और साथ में सेंसर से भी युक्त है। नवीनतम जो डिस्ट्रॉयर है यानी दुश्मन के संहारक हैं उससे ये युक्त है, वो इसमें लगे हुए हैं। और अभी बीते 18 फरवरी की ही बात है, हाल की बात है, इस युद्धपोत की मारक क्षमता में बहुत ही इजाफा, बहुत ही वृद्धि हुई जब 18 फरवरी को INS विशाखापट्टनम से समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। और आप तो जानते हैं कि ब्रह्मोस भारतीय युद्धपोतों का एक बहुत ही प्रमुख हथियार है और ब्रह्मोस अब एक ऐसा वेरिएंट भी देश में विकसित किया जा रहा है जो पानी के भीतर भी प्रयोग किया जा सकेगा और अभी इसे सतह पर ही प्रयोग किया जा रहा है। अब तो भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दूसरे देशों को भी निर्यात करने में सक्षम हो चुका है। 400 किलोमीटर तक सतह से सतह पर अपने लक्ष्य को भेद सकने की क्षमता इसमें हासिल है। INS विशाखापट्टनम इस बेड़े में शामिल अभिवादन और राष्ट्रपति की जय के घोष के साथ ये INS विशाखापट्टनम जो है नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार का फ्लैगशिप भी है और आज इस पोत के कमान अधिकारी हैं कैप्टन बीरेंद्र सिंह बैंस। समीक्षा बेड़े में आगे बढ़ता हुआ INS सुमित्रा का अगला क्रम। And the next one is the ship that you mentioned also belongs to the Vishakhapatnam class, that is INS Chennai. And INS Chennai has been retrofitted with long surface to air missiles, long range surface to air missiles, and it is one of the stealth frigates that Indian Navy has, and it operates mainly out of Vishakhapatnam and also out of the Kochi Southern Command. These are the warships of India that are the pride of the country, and they are lethal, and they also are there for rescue of individuals and for any relief operations that are required. We are now into the fourth leg of the Presidential Fleet Review, and what a morning it has been. And we have been indeed fortunate enough to bring this live to you from the Bay of Bengal off the coast of Vishakhapatnam. And we also saw some daredevilry by the avionics wing of the Indian Navy. कोलकाता वर्ग यानी श्रेणी के जो संहारक पोत हैं यानी डिस्ट्रॉयर श्रेणी के जो युद्धपोत बने हुए हैं भारत में, उसमें जो पहला युद्धपोत था वो INS दिल्ली था और वही इस समय अगली पोत है जिसकी समीक्षा माननीय राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। इसे भारत में ही निर्मित किया गया है और हाल ही में इसमें बहुत सारे सुधार करके इसे अपग्रेड किया गया है। इसकी गुणवत्ता को, इसकी क्षमता को और भी बेहतर किया गया है और इसमें प्रयोग होने वाले हथियारों और सेंसर्स को भी अपग्रेड कर पहले से और बेहतर बनाया गया है। इसकी मारक क्षमता में इन सारे कामों की वजह से बहुत ज्यादा इजाफा या बहुत बढ़ोतरी हुई है। आज INS दिल्ली अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह का फ्लैगशिप भी है और इसके कमान अधिकारी कैप्टन गौरव मेहता। इसके पहले जो INS चेन्नई था, INS चेन्नई के कमान अधिकारी कैप्टन संदीप सिंह रंधावा, लेकिन INS चेन्नई आज नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह का फ्लैगशिप भी था। इसलिए इनकी एक खास अहमियत है, खास जगह है। समंदर के सीने को चीरते हुए ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल पोत एक एक करके जिनकी गति को, जिनकी क्षमता को, जिनके कौशल को तो हमने देखा और हम देख रहे हैं, दुनिया भी उसे देखती है और उसकी क्षमता का लोहा मानती है। लेकिन आज वो नौसैनिक जो इन पर सवार हैं, उनका जोश
उनकी गरिमा और उनका गौरव हम सबको गर्व की अनुभूति कराता है, क्योंकि आज इस देश में सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर हैं, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, इन बेड़ों की समीक्षा के लिए स्वयं आईएनएस सुमित्रा में सवार होकर बंगाल की खाड़ी में समंदर के सीने पर को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए दूर तक धूप की किरणें नजर आती हैं। बहुत दूर विशाखापट्टनम शहर भी नजर आ रहा है और उस शहर के ऊपर एक पहाड़ी जिसपे कैलाशगिरी पहाड़ी के नाम से जिसे जाना जाता है वो भी नजर आ रहा है। अब अगले पोत की तरफ चलते हैं। And we also heard the loud cheering of Rashtrapati Ji ki Jai from INS Delhi, but unfortunately, because of the high gusts of wind here over the waters of the Bay of Bengal, it was not much audible, and we are able to bring this to you thanks to the Indian Navy, who have provided us with a place which is glass ensconced. And the next ship that is coming up to our right is the INS Shivalik, number F44, the first ship of the Project 17. She is an indigenously built stealth frigate constructed at the Mazgaon Docks Limited. These class of frigates are named after prominent Indian mountain ranges. INS Shivalik is commanded by Captain Saurabh Thakur, and today, that is on the 21st of February 2022, is the flagship of Vice Admiral Bishwajit Dasgupta Ati Vishisht Seva Medal, Yudh Seva Medal, Vishes Seva Medal, Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command. And the ship is decked beautifully with the Indian tricolor and the Navy's colors, and also different flags, which is looking lovely against the backdrop of the Bay of Bengal and a very, very glaring sun. भारतीय नौसेना की परियोजना 17 जिसका जिक्र कौशिक ने किया, इसके अंतर्गत जो युद्धक पोत बनाए गए हैं उनके नाम पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। और ऐसा ही एक पोत है आईएनएस सतपुड़ा, और सतपुड़ा से जो ध्वनि आ रही है राष्ट्रपति की जय के घोष की, वो हम तक भी पहुंच रही है, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज में और धीमे स्वर में, लेकिन जोश हमें दिखाई देता है, एहसास, उसकी अनुभूति और उसका स्पंदन हम महसूस कर पाते हैं। और उस जय घोष की ध्वनि के साथ ही माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने स्थान पर खड़े होकर उनके अभिवादन को स्वीकार भी करते हैं। ये आईएनएस सतपुड़ा समीक्षा बेड़े का जो अगला पोत है, बहुत ही नए तरह के हथियारों से सुसज्जित है। इसमें सेंसर भी बहुत ही आधुनिकतम लगे हुए हैं, और जो इसकी युद्धक क्षमता है, जो कॉम्बैट के समय, लड़ाई के समय, युद्ध के समय जो इसका प्रदर्शन होता है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है, हो सकता है। और हमें इसके इतिहास को अगर हम देखें तो उसमें इस बात का आभास हमें मिलता है। वायु हो, सतह हो या उप सतह, जो सब सरफेस से, इन तीनों ही आयामों पर किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है आईएनएस सतपुड़ा। आईएनएस सतपुड़ा आज दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल मकरंद हम्पी होली का फ्लैगशिप भी है, यानी ध्वज पोत भी है, और इसके कमान अधिकारी हैं कैप्टन साकेत खन्ना। उस बेड़े में शामिल आईएनएस सतपुड़ा, जिसकी समीक्षा करने के बाद अब आईएनएस सुमित्रा जो पोत है माननीय राष्ट्रपति महोदय का, आगे बढ़ता हुआ अगले पोत की समीक्षा के लिए तत्पर। Yes, absolutely. The next ship is INS Sayadri, named after the mountain ranges to the west of India, the Western Ghats. This mighty Sayadri is designed to avoid detection by the enemy by reducing the ship's radar. Its acoustics and thermal signatures make it a special ship. Its successful design has prompted the Indian Navy to order more ships of this class. The INS Sayadri is commanded by Captain Manjeet Moses Thomas, and today is the flagship of the Flag Officer Commanding Eastern Fleet Rear Admiral Sanjay Bhalla Nausena Medal. And what a morning it has been. We have seen the best of Indian Navy's drill, discipline, its lethal cutting-edge technology, and of course, its human assistance to people in need. These are sights that all those who are present here on board the INS Sumitra today are going to cherish
for moments to come, for eternity. और अब इस बेड़े में शामिल अगला पोत आईएनएस तेग, जहां से राष्ट्रपति के जय की ध्वनि और माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने स्थान पर खड़े होकर अभिवादन को स्वीकार किया। दरअसल ये तलवार श्रेणी के युद्धक पोत हैं और इसमें ये पहला पोत आईएनएस तेग के नाम से जिसे इस बेड़े में शामिल किया गया था। ये पोत, इनकी खास बात यह है कि किसी भी दिशा से आने वाले खतरों से निपटने में न सिर्फ ये सक्षम है बल्कि दुश्मन को धूल चटाने, और अगर हम समंदर में बीच में जा रहे हैं तो यूं कह सकते हैं कि पानी पिला देने की क्षमता भी ये आईएनएस तेग रखता है। दरअसल ये पोत कई प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से इस रूप में युक्त है और इसकी इसीलिए क्षमता जो है वो बहुत अधिक है। साथ ही ये कामोव 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर या कामोव 28 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर को भी लेकर चलने में सक्षम है। आज आईएनएस तेग पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल समीर सक्सेना का ध्वज पोत है और इसके कमान अधिकारी हैं कैप्टन सुमित सिंह सोधी। बहुत ही अनुशासन के साथ, बिना दूर से देखने पर शायद इस बात का एहसास होता है कि वो कोई ऐसी आकृति है जो बिना हिले डुले अपने स्थान पर है, लेकिन हवा के झोंकों के साथ जो ध्वज हैं वो लहरा रहे हैं और ये ध्वज अलग अलग रंगों के, अलग अलग तरह का संदेश देते हुए, अलग अलग तरह के सिग्नल देते हुए, लेकिन इनकी इस समय सजावट के रूप में इन पोतों पर इसे लगाया गया है और सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज और पीछे के हिस्से में जो नौसेना का ध्वज। The next ship which is coming up and the Honorable Rashtrapati Ji is extending the naval salute to INS Rana. INS Rana is a guided missile destroyer and it is armed with the latest Barak missiles and has the cutting edge technology. INS Rana in fact is the oldest surviving destroyer of the Indian Navy and today is commanded by Captain Kodalpuram Srivatsa. The INS Rana is indeed a destroyer which has a class of its own. And the sailors of INS Rana are doing, as they say, the Jai Ghosh, or they are proudly proclaiming Rashtrapati Ji ki Jai. और आईएनएस राणा से पहले कौशिक आईएनएस तलवार जो है वहां पर ये पोत उपस्थित है कमान अधिकारी कैप्टन पार्थ उमाकांत भट्ट के नेतृत्व में। नौसेना का जो तलवार वर्ग है, श्रेणी है, उसका ये पहला पोत है आईएनएस तलवार और इसी श्रेणी में बाद में अन्य पोतों का भी निर्माण किया गया। पश्चिमी कमान मुंबई का ये हिस्सा है और रूस में मूलतः तो ये निर्मित पोत है जिसे 18 जून 2003 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। अगर इसकी भार की बात करें श्रोताओं, यानी इसका वेट जो है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना विशाल आकृति का ये पोत है। 4035 टन इसका भार है, लंबाई 125 मीटर की, गति 30 नॉट की गति से चलने में यह सक्षम है, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बहुत सारी भूमिकाओं को निभाने में भी यह सक्षम है। इसमें अनेक अभियानों और युद्धाभ्यासों में भी आईएनएस तलवार ने हिस्सा लिया है। समुद्री लुटेरों से भी कई बार रक्षा की है इस पोत ने, और मालाबार 2008 का जो युद्धाभ्यास था आईएनएस तलवार ने उसमें भी हिस्सा लिया था। तो इस समय आईएनएस तलवार और उसके बाद आईएनएस राणा, जय घोष, राष्ट्रपति महोदय की जय, इस घोष को हम यहां तक सुन पा रहे हैं नौसैनिकों के इस जोश और उल्लास के बीच में। Due to extreme winds gust, we are unable to hear the Jai Ghosh, but coming up next is the ship number 40, and this ship is a large destroyer of the Indian Navy, and it is bedecked with colorful flags, and also we can see some of the guns that are present on the upper deck of the F-41 and the sails, and it's mostly a communication frigate of the Indian Navy. The sailors are standing to attention with their sailing caps in the right hand and saluting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. Indeed, it's a red letter day for each of the sailors and other officers on board F-41, a communications ship which is put anchor here, or cast anchor, just off the coast of Vishakhapatnam in the Bay of Bengal. And it's almost 1.5 hours since the presidential
fleet review has begun, but the enthusiasm and the discipline of the Indian Naval Force is there for all to see today. The might of the vanguards of our coast, the Indian Navy, is indeed something that is worth seeing. And today we have been fortunate enough to see the men in white uniform who protect us from aggression through water do the best and present their best salute to the Supreme Commander of India's armed forces. तो समीक्षा बेड़े में चौथे कॉलम का अंतिम पोत आईएनएस जलश्वा के पहले जो है आईएनएस रणवीर की तरफ से उसकी समीक्षा की गई राष्ट्रपति महोदय द्वारा, जो कि राजपूत श्रेणी के डिस्ट्रॉयर्स में से एक है। और अब जलश्वा के पोत से ध्वनि जो आई राष्ट्रपति के जय घोष की, ये दरअसल एक बहुत विशाल आकृति का ये पोत है और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के रूप में इसको जाना जाता है। इस पर UH-3H हेलीकॉप्टर भी है जिसका उपयोग समुद्री ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। आपको श्रोताओं बताएं कि कोविड महामारी के दौरान इस जहाज ने राहत और बचाव कार्यों में बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। मिशन सागर और ऑपरेशन समुद्र सेतु में ये पोत शामिल था, यानी आईएनएस जलश्वा जो है उसमें शामिल था। कमान अधिकारी कैप्टन PSS उदय किरण के नेतृत्व में ये पोत यहां पर इस बेड़े में शामिल है। दरअसल अमेरिका से इसे खरीदा गया था और ये एकमात्र अमेरिका से खरीदा गया जलपोत है, नौसेना का पोत है। आईएनएस जलश्वा का जो विशाल डेक है, एक साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा सकता है वहां से। और 26 फरवरी 2011 में आईएनएस जलश्वा ने आईएनएस मैसूर के साथ लीबिया में जो गृह युद्ध हुआ था उस समय वहां से भारतीयों को बचाकर निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह ऑपरेशन सेफ होम कमिंग के रूप में जिसे जाना गया था और उसमें उन भारतीयों को और भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों को भी जो वहां संकट में थे उनको वहां से निकालने में भूमिका निभाई है। ये भारतीय नौसेना की और भारत देश के हर हिस्से की, यानी हमारे वैज्ञानिक हो, हमारे किसान हो, हमारे सैनिक हो, वे हमेशा मानवीयता की और मानव की रक्षा के लिए जिस तत्परता के साथ अपने कर्तव्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उससे हम सबका गौरव बढ़ता है। और आपने ये बात महसूस की होगी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां भी कोई संकट काल होता है तो उस समय भारतीय सेना के हमारे अलग अलग अंग और समुद्र की अगर बात होती है, क्योंकि सामुद्रिक क्षेत्र में भारत की शक्ति एक महत्वपूर्ण अपना परिदृश्य रखती है और उसके पास एक बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र है जो उसकी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वो तो है ही, लेकिन अपनी जो आर्थिक क्षेत्र है उससे भी कहीं आगे जाकर भारत की भूमिका है, क्योंकि भारत की नौसेना की जो क्षमता है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक इसकी भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम देता है। और इसी आयाम का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर इस बेड़े की समीक्षा के रूप में यहाँ पर हम सबके सामने जो हो रहा है। और ये 12वां बेड़े की समीक्षा का आयोजन है जब माननीय राष्ट्रपति महोदय नौसेना के बेड़े की समीक्षा करते हैं और विशाखापट्टनम में जो पूर्वी कमान है नौसेना का, उसके माध्यम से ये तीसरा इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। 44 पोत जो है वो इस बेड़े में समीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे पोत हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वायुयान हैं जो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय नौसेना की क्षमता को भी यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की अतल गहराइयों में या समुद्र के ऊपर के आसमान में भी इस रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। और अभी अन्य बहुत सारे रोमांचक प्रदर्शन यहाँ होने, खासतौर पर जिसके बारे में लोगों को एहसास भी है, आभास भी है और जिसके लिए लोगों के मन में उत्कंठा भी होगी, क्योंकि जो मरीन कमांडो हैं भारतीय नौसेना के, वो प्रदर्शन कुछ ही देर में यहाँ पर उनका आरंभ होगा। तो ये 4-1 जो आईएनएस जलश्वा है उसके वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन, उनका अभिवादन राष्ट्रपति की जय के घोष के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने डेक पर अपने आसन से खड़े हुए सलामी की मुद्रा में और उन्होंने स्वीकार किया है राष्ट्रपति की जय के घोष के और अभिवादन को स्वीकार करते हुए उन्होंने, यूं लगता है और इस बात को हम महसूस करते हैं कि जब सर्वोच्च कमांडर स्वयं उपस्थित हो बेड़े की समीक्षा के लिए और नौसैनिकों को अपना आशीष देने के लिए, अपनी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने के लिए, तो हर नौसैनिक अपने आप में बहुत ही गौरव की अनुभूति रखता है। डेक के ऊपर विशाल आईएनएस जलश्वा के लंबे विशाल डेक पर नौसैनिक हाथ में अपना कैप लिए हुए स्थिर मुद्रा में अनुशासन के साथ लेकिन जोश के साथ भारतीय इस समय नौसेना की समीक्षा बेड़े में जब उन्होंने राष्ट्रपति का जय घोष किया। Yes, absolutely. And the
INS Jalashwa also played a stellar role during the COVID-19 pandemic when, as part of reaching out to our neighboring countries, India dispatched relief material and also medical supplies and equipment to many countries in the Indian Ocean littoral states and right up to Mauritius. And INS Jalashwa itself carried more than 30,000 tons of relief material and medicines from India to many countries. So these are the works that are being undertaken by the Indian Navy. First is to secure our maritime borders, provide security to international ships that pass through the waters of India, and also to reach out to those people who are in need. And we now see the SAR demo, the Hawk demo, as the Hawk aircraft of the Indian Navy's aviation team doing a bomb burst maneuver. That is, as a bomb bursts, 3 aircrafts are going in 3 different directions, flying at 400 knots of airspeed over the presidential yacht, the INS Sumitra, and the roar of the aircraft says it all. These Hawks belong to the Indian Naval Air Squadron 551, the East Coast Fighters as they are known, and these Hawk aircraft are also known as the Phantom. And the converse is heavily cheered by the Honorable President of India, the First Lady, the 3 service chiefs, and also the other dignitaries who are present on the deck. This is indeed a wonderful sight. Here we have the Indian Navy, the vanguards of our oceans, who are having their own aviation units and their air squadrons at different places. And now we have seen the formation of 180-degree turn without compromising mutual crossover and support. These Hawk aircraft are now approaching and performing 2 hard turns. Mind-boggling is the word. Mind-boggling is the word that comes to the mind. These 2 aircraft flying almost as parallelly as the canopies face the INS Sumitra. These hard turns. Enable the fighters to carry out a maximum rate turn to point sights at an adversary. And now we see an aircraft just flying over the INS Sumitra, and it is doing taking a complete circumambulation of the presidential yacht. What a sight to see here off the coast of Vishakhapatnam. And the aircraft is now completing its circle and coming back towards the Sumitra and to complete the circle. Everyone present here is cheering this wonderful display of air prowess of the Indian Navy. These are indeed the cutting-edge finesse that the Indian Navy has, one of the largest navies in the world today, and we all Indians are proud of our Navy. And today, the demonstrations by the air wing and by the different vessels of Indian Navy has indeed made it a stellar day. हॉक यानी जिसे फैंटम के नाम से भी जाना जाता है, 400 नॉट की गति से उड़ान भरते हुए आईएनएस सुमित्रा के ऊपर से इस कारनामे दिखाए हैं। हॉक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से इसमें बॉम्ब फॉर्मेशन, 180 डिग्री पर घूमना और हॉक फॉर्मेशन, सामरिक युद्धाभ्यास हो या फिर दुश्मन के खिलाफ
जो अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं जब भारतीय नौसैनिक और ये स्क्वाड्रन के जो सैनिक हैं, और इस समय एक दूसरे को क्रॉस करते हुए उसकी सहायता भी करते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। फ्लाई पास्ट में अब जो आरंभ हो रहा है उसमें हवाई बेड़ा जो भारतीय नौसेना का है, दुनिया के कुछ ही देशों के पास भारतीय जो नौसेना है, वहां की नेवी है, उसके पास हवाई बेड़े इस तरह के हैं और उसमें से भारत एक है। और ये आज फ्लाई पास्ट का नेतृत्व कर रहे हैं फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन रियर एडमिरल फिलिपोस जी पाइनेमोथिल। इस समय समुद्र की सतह से मुश्किल से 200 फीट की ऊंचाई से भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट की शुरुआत कर रहे हैं दिव्य मित्रों। और यह हमारी यानी INS सुमित्रा की बाईं तरफ से सबसे आगे चेतक जो कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराता हुआ, और उसके बाद के जो 4 चेतक हेलीकॉप्टर हैं वे भारतीय नौसेना के ध्वज को लहराते हुए एक दूसरे से बहुत करीब लेकिन एक तालमेल के साथ वहां से उड़ान भरते हुए ये 4 हेलीकॉप्टर जो है यहाँ से अभी अभी INS के बाईं तरफ से हवा में एक ये प्रदर्शन करते हुए निकले हैं। चेतक INS 321 यानी 3 चेतक हेलीकॉप्टर नौसेना के 321 स्क्वाड्रन से अब आ रहे हैं और ये 3 आगे और उसके 3 पीछे ये हेलीकॉप्टर एक समान गति से एक लेवल पर एक स्तर पर ये उड़ान भरते हुए ये स्क्वाड्रन जो है खासतौर पर जो चेतक का है वो खोज के कार्यों में या बचाव या राहत के जो कार्य होते हैं उनमें ये बहुत ही विशेष रूप से दक्ष होते हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर अमरदीपक बुलुसु। और अब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ध्रुव भारत में जिसका निर्माण किया गया और इसकी उपयोगिता इतनी ज्यादा है, इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि गार्जियंस के नाम से इसे जाना जाता है। देश में ही डिजाइन किया गया और देश में ही निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर, यह हेलीकॉप्टर कई तरह की भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। 3 हेलीकॉप्टर ध्रुव जो कि नेतृत्व जिसका कैप्टन अजय यादव के हाथ में है, INS सुमित्रा यानी हमारी बाईं तरफ से हवा में उड़ान भरते हुए पीछे की तरफ अपने आगे लेकिन हमसे पीछे की तरफ छूटते हुए दृश्य से ओझल होते हुए फ्लाई पास्ट का यह समय है। और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जो कि ध्रुव का प्रदर्शन था, उसके बाद लांसर्स के नाम से जाने जाने वाले एक और प्रदर्शन को इस समय हम देख पा रहे हैं जो कि INS के बाईं तरफ से 3 हेलीकॉप्टर इस समय कमांडर SS डैश के नेतृत्व में डायमंड फॉर्मेशन में ये यहां से उड़ान भरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें MK3 हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। अत्याधुनिक सामरिक उपकरणों से ये सुसज्जित होते हैं हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कि आजकल बहुत ही प्रचलित है उसमें भी दुश्मन के हमलों को नाकाम करने की क्षमता ये रखते हैं। लांसर हेलीकॉप्टर्स ध्रुव हेलीकॉप्टर का ही एक आधुनिक अवतार आप कह सकते हैं और जो कि उससे थोड़ा एडवांस है और यहीं विशाखापट्टनम से ही ये तैनात है। यहीं पर जो नौसेना का बेड़ा है, पूर्वी बेड़ा, उसी के साथ ये संबद्ध है। और अब अगला फॉर्मेशन, अगली उड़ान जो हमें नजर आ रही है 3 सी किंग सारस के रूप में उड़ान भरते हुए कंपोजिट फॉर्मेशन है सी किंग UH-3H हेलीकॉप्टर्स का। इसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर हरदीप सिंह। INS जलश्वा से जो स्क्वाड्रन 350 संचालित होती है उसी कमांडर हरदीप सिंह उसके कमांडिंग ऑफिसर भी हैं। और ये खास बात सी किंग की है कि किसी भी तरह के मौसम में ये सी किंग बहुत ही कुशलता के साथ अपने काम को अंजाम दे सकता है, जल में भी और हल में भी, यानी सतह पर भी इस तरह के कारनामे और इस तरह की भूमिका को निभा पाता है। अगला एक और फॉर्मेशन सी किंग का ही। Sea King 42B Harpoons, the twin-engine Sea King 42 helicopters, often called the Flying Frigates, are led by Commander Sumit Kumar Gupta, commanding officer of 330 Squadron. They are barely 200 feet above water, and we can make out their formation clearly from the position that we are sitting at. And the Indian Navy is perhaps one of the very few navies in the world which has its own air squadrons. And next is 3 Eagles, the Kamov 28-31, a composite formation of Kamov 28 and 31 of the 333 and 339 Squadron. These helicopters are used in various roles and in early warning roles for the Navy to use for surveillance purpose. The formation of the Kamovs was led by Commander Haricharan. And following the Kamovs is the Indian Navy's Dornier kites in diamond formation. This is called the diamond formation. It's been led by Captain P. Ratish, commanding officer of the 311 Squadron. The Dorniers have sensors fitted to ensure situational awareness of battle space. And these Dorniers play a very important role in ensuring security of the vessels which are in the high seas.
And after the Dornier kites, all eyes are gazed towards the Sea Eagles. These are also Dorniers. These Dorniers are based at the Indian Naval Air Squadron 313. They operate from Meenambakkam near Chennai and is being commanded by Commander Kunal De. The Sea Eagles are now flying past the INS Sumitra, the presidential yacht for the President's Fleet Review 2022. These Sea Eagles are also meant for transporting material and men from different naval bases. And after the Sea Eagles, we now see the Flying Fish. These are the Dorniers of the 550 Squadron from INAS Garuda, that is the Indian Navy Air Squadron Garuda, the premier training establishment for naval aviators. And these are maritime reconnaissance operations. The formation of the Flying Fish today has been commanded by Captain Arjun Menon. These aircrafts look tiny, but they do pack a punch. And after the Flying Fish, everyone on board are looking up expectantly at the skies, and here they come. The Dorniers of the Indian Coast Guard, the Rakshaks. These Rakshaks are based at the Air Squadron of the Coast Guard in Porbandar, and this squadron is being commanded by Commandant Jayant Narayan Thorat. The Dorniers of the Indian Coast Guard have just flown past the INS Sumitra, and coming up now is the Peace, the Resistance of the Indian Navy. It's the latest maritime patrol aircraft, the Poseidon or the P-8I aircraft. It belongs to Indian Naval Air Squadron 312. The Poseidon is what is known as eyes over the waters, Indian Navy's eyes. And these latest surveillance aircrafts play a very important role. And now the P-8I, we can see from our commentary booth, has just flown over the INS Sumitra, and it belongs to the squadron known as Sky Lions and was commanded by Captain Sudeep Nambiar. These are the latest acquisition. The P-8I Poseidon is one of the latest acquisitions of the Indian Navy. And now coming up are the mean machines, the Hawks Phantom of the Indian Navy. It will now pass us. We can see it in the horizon. It is charging in, busting, and here it goes at a speed of nearly 400 kilometers per hour. This twin-seater, single-engine Hawk, known as the Phantom, was led by Commander Sailesh Rana, commanding officer of the 551st Squadron. And Indian Navy's air power is perhaps one of the best in the world that any Navy can boast of. And we are slowly approaching the point where India's underwater prowess is going to be displayed soon. And now comes, just before the submarines, the MiG-29K Black Panthers coming up in a perfect diamond formation. The Black Panthers, the MiG-29K fighter aircraft based at INS Hansa and operate from INS Vikramaditya, the aircraft carrier of India. The aircraft carrier is part of the INS 303 Squadron. The squadron is commanded by Captain Shiv Shankar Singh Sambyal. And the Black Panthers are indeed mean machines. And now we see 8 MiG-29K aircraft coming in inverted V formation, flying above the presidential yacht. What a
side it is of the coast of Vizag in the Bay of Bengal. The dignitaries on the top deck, or the presidential deck as it is known as, are greeting the aircrafts with large round of cheer. And as they say, the lull before the storm. We are now going to embark on another scintillating display of India's underwater sea power. And in a distance, we can see the mean submarines of the Indian Navy. Indian Navy is also a submarine power, and the first of the submarines that is coming up is the mobile submarine column. The first submarine in the mobile column is INS Vela, recently inducted and made in India. It is a Kavarati class submarine. These submarines are some of the quietest submarines in the world, and they provide us with all sorts of surveillance of the high seas. The INS Vela is commanded by Captain Anish Matthew. The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the First Lady, Srimati Savita Kovind, Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri, these three service chiefs are all saluting the INS Vela as the presidential yacht INS Sumitra passes through the submarine. This is indeed a wonderful sight to see. India's prowess on water, below water, and of course the skies above water was on display here at the Presidential Fleet Review 2022, and every dignitary and guest present here on the different decks of INS Sumitra will cherish these memories over and over again as they witnessed the very difficult performances, and those scintillating moments will always remain in memory. और इस समय मोबाइल सबमरीन कॉलम जिसकी पहली पनडुब्बी हमारी बाईं तरफ आईएनएस बेला जो कलवरी श्रेणी की है, जिसका जिक्र अभी आपके साथ हुआ, और नौसेना में इसे शामिल किया गया था हाल ही में, और ये पनडुब्बियां ऐसी हैं जो दुनिया में सबसे तेज गति से कार्रवाई करने वाली पनडुब्बियों में शामिल हैं। यहां से समुद्र की सतह के ऊपर उसका कुछ हिस्सा नजर आ रहा है और उस हिस्से पर राष्ट्रीय ध्वज और नौसेना का ध्वज भी दिखाई दे रहा है। हम सब के लिए एक ऐसा आकर्षण होता है जिसके भीतर की दुनिया क्या होती है हमें मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि कई कई दिन तक या महीनों तक समंदर की गहराइयों में उतरकर जो समंदर के जो सीमाओं की रक्षा करने वाले या दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले ये हमारे सबमरीन्स हैं। आईएनएस बेला जिसका नेतृत्व, जिसके कमानाधिकारी कैप्टन अवनीश मैथ्यू, और उसके बाद दूसरी जो सबमरीन यानी पनडुब्बी है वो है आईएनएस सिंधु कीर्ति की। 1980 के दशक के अंत में या 90 के दशक के आरंभिक वर्षों में इन पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। बाद में इनमें कुछ छोटे छोटे बदलाव भी किए गए और इसे और बेहतर बनाया गया, इन्हें और उत्कृष्ट श्रेणी में तैयार किया गया, और अब इनके टॉर्पीडो ट्यूब से एंटी शिप मिसाइलें भी लॉन्च की जा सकती हैं। जब पनडुब्बी समुद्र के गहरे पानी के भीतर होती है उस समय भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है, यानी एंटी शिप मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। आईएनएस सिंधु कीर्ति ये दूसरी पनडुब्बी, और उसके बाद ये आईएनएस सुमित्रा जब तेजी से आगे बढ़ता हुआ तीसरी पनडुब्बी भी हमारी दृष्टि के सामने हमें दृष्टिगत होती हुई, उस पनडुब्बी का नाम है सिंधुराज। और इसकी विशेष बात श्रोताओं ये है कि इस पनडुब्बी पर एक विशेष तरह का पदार्थ इसके बाहरी हिस्से में लगाया गया है, और उस पदार्थ का परिणाम क्या होता है कि दुश्मन इन पनडुब्बियों को आसानी से इसका पता नहीं लगा पाता है। इसके सेंसर्स, उनके सेंसर्स इनके सिग्नल्स को नहीं कैच कर पाते हैं, और इस रूप में ये अपनी सुरक्षा भी करता है और दुश्मन के छक्के छुड़ाने में भी सक्षम है। ये पनडुब्बियां विशाल आकृति है, समुद्र की गहराइयों में उतरकर कई कई दिन तक अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं। और आपको याद होगा 1971 का वो युद्ध जिसमें कराची के बंदरगाह पर हमारे भारतीय नौसेना के जहाजों ने, पनडुब्बियों ने और पोतों ने जो आक्रमण किया था, जिसमें भारतीय नौसेना को कोई क्षति नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय पाकिस्तान के
जो नौसेना थी उसका बंदरगाह था, उनके पोते थी, उनको गंभीर क्षति पहुंचाई थी भारतीय नौसैनिकों ने और इनके कारनामों ने। और अब तीसरी पनडुब्बी सिंधुराज, जो कि अधिकारी, जिसके कमान अधिकारी कमांडर विवेकानंद मिश्रा, लेकिन इस बीच कॉम्बैट फ्री फॉल का प्रदर्शन जो कि आईएनएस कर्ण के मरीन कमांडो हैं वो यहां पर कर रहे हैं और पूर्वी कमान के साथ संबद्ध आईएनएस कर्ण का ये बहुत ही एक स्पेशल ऑपरेशन इकाई है। इस समय आसमान की ऊंचाइयों पर हम जो देख पा रहे हैं, दरअसल 6000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल किया, उसके बाद पैराशूट के सहारे नीचे की तरफ उतरे और नीचे जो बोट्स हैं, रेस्क्यू बोट्स हैं, वो धुएं की लकीरों को हवा में छोड़ती हुई ताकि वो निर्धारित एक जगह पता लगे जो वो हमारे कमांडोज हैं या पैराशूटर्स हैं और वो उसी स्थल पर आकर अपने मिशन को अंजाम दे सके। दरअसल राहत के दौरान तो इस तरह के प्रदर्शन किए ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा युद्ध के समय भी इस तरह के प्रदर्शनों को अंजाम दिया जाता है। और आज 6 मार्कोस कमांडो लेफ्टिनेंट कमांडर शक्ति सिंह के नेतृत्व में 6000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद अब राष्ट्रपति महोदय के पोत यानी आईएनएस विक्रांत के निकट वे समंदर की सतह को छूने की कोशिश करते हुए बहुत ही निकट आ चुके हैं और रंग बिरंगी, बल्कि उसमें से 2 ऐसे जो पैरासेलर्स हैं वो हमें नजर, जो कमांडोज हैं, जो मार्कोस के कमांडो, मरीन कमांडो, वो नीचे उतरे। अब इस समय तीसरा ऐसे कमांडो जो है वो नीचे उतरते हुए समुद्र की सतह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। आज ये 6 मार्कोस जिन्होंने ये बेहतरीन और रोमांचक प्रदर्शन किया है, ये अपने आप में, इन्हें दरअसल ये प्रहार के रूप में इन्हें जाना जाता है क्योंकि एक विशेष तरह के ड्रॉप जोन में इन्हें गिराया जाता है। आज तो ये प्रदर्शन है, लेकिन कभी युद्ध के दौरान या कभी विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में दुश्मन के इलाकों में भी या दुश्मन के जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वहां भी इस तरह के ड्रॉपिंग के माध्यम से ये कमांडो गोताखोर तैर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं और वापस अपने क्षेत्र में आते हैं और उनको वहां से ले लिया जाता है। तो इस समय जो माननीय राष्ट्रपति महोदय इस समय इस प्रदर्शन को देखते हुए उनके चेहरे की आभा हम सबको प्रेरित कर रही है और बहुत तेज गति से जो ये कमांडो, जिन्होंने मरीन कमांडो समुद्र की सतह पर जिन्होंने आकर अपने आप को उतारा है, उसमें से कुछ को वापस नाव में लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कमांडो जो उतरने वाले हैं उन तक नाव पहुंचने की कोशिश कर रही है। धुएं की एक लकीर वहां पर छोड़ी जाती है ताकि जो कमांडोज हैं वो देख सके कि उन्हें कहां की बोट और कौन सी रेस्क्यू बोट है जहां उन्हें पहुंचना है या उनके निकट वो बोट आ रही है। और इस तरह से एक और मरीन कमांडो को वहां तक पहुंचे ही ये रेस्क्यू बोट और उन्हें अपने आप में समाहित करते हुए यानी उन्हें अपने बोट में शामिल करते हुए, ये बहुत ही एक रोमांचक प्रदर्शन ही नहीं होता है, लेकिन जब कार्रवाई या मिशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदर्शन की बात और है। लेकिन दुश्मन के क्षेत्र में उतरकर दुश्मन के क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि को अंजाम देना अपने आप में कितना बड़ा रिस्क होता है, खतरा होता है, लेकिन खतरों से खेलना हमारे भारतीय जांबाजों को अच्छी तरह आता है। दुश्मन के दांत खट्टे करना उन्हें अच्छी तरह आता है। तो इस तरह से हमारे मार्कोस मरीन कमांडो जो कि आईएनएस कर्ण के साथ संबंध है, स्पेशल ऑपरेशन इकाई है ये, और उसके अंदर उन्होंने एयरबॉर्न इंसर्शन टेक्निक का प्रयोग करते हुए ये बहुत तरह की गतिविधियां हमेशा अंजाम देते हैं और आज भी इन्होंने इस तरह का प्रदर्शन यहां पर किया है लेफ्टिनेंट कमांडर शक्ति सिंह के नेतृत्व में, जिसके रोमांच के अनुभव हम सबको लंबे समय तक याद रहेंगे और आप तक ये विवरण जो है आकाशवाणी के माध्यम से पहुंच रहा है। एक बार पुनः आपको बता दूं कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा का ये आयोजन है जो भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान यानी विशाखापट्टनम के तट पर ये इस समय आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और ये इस रूप में इस कॉम्बैट फ्री फॉल के साथ ही अब ये अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं इस समीक्षा बेड़े के, जहां समुद्र की सतह पर हम यहां पर देख पा रहे हैं, अभी दूर वो दृष्टि दूर तक नजर जाती है, उसमें 4 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट का बेड़ा जो है वो मोबाइल कॉलम में, यानी वो आगे बढ़ते हुए हमने क्रॉस करते हुए वे आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसमें लीड शिप जो है वो सबसे आगे आईएनएस तिहाई टोंगो 93 जिसका नंबर है कमांडर सिद्धार्थ गुप्ता के नेतृत्व में, ये समुद्र की सतह पर आईएनएस सुमित्रा को क्रॉस करते हुए ये जो 4 अलग अलग मोबाइल कॉलम में लीडशिप में ये आगे बढ़ेंगे, उसमें से तिहाई सबसे पहले और इस समय तेज हवा के झोंकों के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ। Yes, absolutely. And the Honorable President of India is a proud Supreme Commander of his forces today. As we saw the scintillating display of the Marine Commandos just after the Indian submarines display, it is indeed a sight to see, a sight to behold, and all those who are aboard the INS Sumitra today are going to carry very fond memories of these
nerve-wracking displays by India's naval personnel. And as Jainendraji just mentioned that we are into the last leg of the Presidential Fleet Review 2022. The INS Sumitra, the presidential yacht today, will now be crossing through the INS Tihayu Tango 93, commanded by Commander Siddharth Gupta. And these fast attack crafts will slowly guide the INS Sumitra towards port, that is the Eastern Naval Command headquarters at Vishakhapatnam. And the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, is exchanging a few words with Admiral R. Harikumar, the Chief of Naval Staff. And what a sight it is indeed. The tricolor is flying at full mast and at a lovely pace over the Bay of Bengal. And the INS Tihayu Tango 93, commanded by Commander Siddharth Gupta, just crossed the INS Sumitra, and we are going to see the next ship, that is the INS Batti Malv with pennant number Tango 67, commanded by Commander Santosh Kumar Thakur. These water jet fast attack craft are towards the right of INS Sumitra, that is towards our right, and these naval ships perform very onerous duties in the high seas, especially where rescue of fishermen are concerned, and they also provide many other logistical support to the corvettes, the frigates, and the destroyers. These small attack jets have a unique place in Indian Navy's history, and after INS Batti Malv, the third ship is the mobile column INS Bangaram. Its number is 65 and is being commanded by Commander Guru Prasad G.B. Patil. So these water jet fast attack craft play a very important role in times of crisis and also for surveillance purposes. So they too are cheering the Supreme Commander of India's Armed Forces, the President of India, Shri Ram Nath Kovind. And the next ship is the next ship that will greet the INS Sumitra is another water jet fast attack craft, the INS Bharatan. Bharatan is an island in the Andaman and Nicobar Islands, and INS Bharatan is named after that. Its number is T68 and is commanded by Commander Anup Singh Rawat. The President of India saluting his The Honorable President of India received the salute from his men and officers of INS Bharatang. The Bharatang is a lightly armed vessel and has played a significant role in enforcing India's coastal security. And of course, in a short while from now, this wonderful presentation of the Fleet Review will come to an end.
लगभग 60 पोत जो कि आज के इस समीक्षा बेड़े में शामिल हुए, 50 वायुयान एयरक्राफ्ट अलग अलग वर्ग के, अलग अलग श्रेणी के, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया इस समीक्षा बेड़े में। और इस समीक्षा बेड़े में इसकी समीक्षा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय जो कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, वे स्वयं यहाँ पर पधारे। 4 ऐसे पोत जो कि फास्ट अटैक क्राफ्ट के रूप में जिन्हें जाना जाता है, जिसमें शामिल लीड शिप जिसकी थी INS तिहाई, उसके बाद INS मंतिमाल, उसके बाद INS बंगाराम और INS भारतन जो कि आखिरी चौथा पोत है इस कड़ी में, इस श्रृंखला में। और ये 4 वाटर जेट फास्ट अटैक जो क्राफ्ट है, अब आखिरी पोत यानी INS भारतन जो कि सलामी जिसने दी है माननीय राष्ट्रपति महोदय को। और इस रूप में ये बहुत ही रोमांचक, बहुत ही आकर्षक जो पहलू पक्ष था, जो स्तर थे इस समीक्षा बेड़े के, वो जरूर संपन्न होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब ये समय है जब भारत के माननीय राष्ट्रपति जो कि भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, अपने शुभकामना, अपना आशीष, अपना मार्गदर्शन अपने संबोधन के रूप में हम सबको देंगे, पूरे देश को देंगे। और विशेष तौर पर उन नौसैनिकों को जो इस देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए समुद्र के भीतर, समुद्र की सतह पर या समुद्र के ऊपर भी अपने कर्तव्यों को लगातार उसका निर्वहन करते हैं। वैसे तो ये समीक्षा बेड़े की परंपरा बहुत प्राचीन है, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, रामायण के किष्किंधा कांड में भी इसका विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है, जब सुग्रीव वानर सेना के तमाम नेताओं को, नेतृत्व करने वालों को कहते हैं कि वे कहां-कहां, किस-किस समुद्र में जाकर अपने मां सीता को ढूंढें। तो इस रूप में ये बहुत प्राचीन परंपरा आज एक आधुनिक रूप में यहां पर है। और अब यहां अवसर है जब माननीय राष्ट्रपति महोदय संबोधन अपना रखेंगे और अपने संबोधन के माध्यम से निश्चित रूप से उनका आशीष, उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं भारतीय नौसेना के हर सदस्य को मिलेंगी, हर भारतवासी को मिलेंगी। इतने विशाल लगभग 750 किलोमीटर लंबे भारतीय समुद्र तट को, जिसकी संरक्षा का, जिसकी सुरक्षा का दायित्व तो भारतीय नौसेना के ऊपर है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आर्थिक हित हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी भारतीय नौसेना, इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल और तमाम अलग अलग तरह के संस्थान और प्रतिष्ठान जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, सक्रिय हैं, उनके माध्यम से देश के आर्थिक हितों की रक्षा होती है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने और भारतीय समुद्री क्षेत्र में जो तमाम प्रतिष्ठान हैं, उन्होंने जिस रूप में अपनी भूमिकाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निभाई हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना के प्रति एक विशेष तरह की आस्था का भाव पैदा होता है। कोई भारतवासी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक सकारात्मक भूमिका निभाता है तो उसका लाभ, उसका श्रेय और उससे भारत देश को पहचान मिलती है। और इसीलिए हर भारतवासी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो किस रूप में अपनी भूमिका को निभाता है, भारत की छवि का उसके साथ सीधा संबंध है। तो यह अवसर इस बात का है, हवा की गति बहुत तेज है और इस तेज गति के बीच में अब जो कि समीक्षा बेड़े के अंतिम चरण में, अंतिम प्रदर्शन के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय के संबोधन का भी समय होगा, लेकिन साथ ही साथ INS सुमित्रा और अब माननीय राष्ट्रपति महोदय का संबोधन। भारतीय नौसेना के सदस्यों को माननीय राष्ट्रपति महोदय संबोधित करेंगे, अपना आशीष देंगे, मार्गदर्शन और शुभकामनाएं देंगे। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जी, यूनियन मिनिस्टर्स श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्री अजय भट्ट एंड श्री देवू सिंह चौहान जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R. हरि कुमार जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी जी, श्री T. सीताराम, स्पीकर आंध्र प्रदेश असेंबली, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश श्रीमती M. सुचरिता, श्री B. सत्यनारायण, श्री K. कन्नू बाबू एंड श्री श्रीनिवास राव, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एडमिरल D.K. जोशी, ऑफिसर्स एंड सेलर्स ऑफ द इंडियन नेवी, distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be here with you today. I am pleased to review the readiness of the Indian naval ships, submarines, aircraft and other elements of our maritime power today.
The excellent parade of ships, aircraft and submarines showcases the professional competence and determination of the maritime services of the nation. The parade also showcases the preparedness of the Indian Navy for any contingency. This beautiful city of Vishakhapatnam, also popularly known as Vizag, has been an important port for centuries. Historically, it has been known as a crucial hub of transnational trade and commerce. From the 6th century before Common Era to the 21st century, Vizag continues to be an important center for industry and economy. Its strategic importance is underlined by the fact that the headquarters of the Eastern Naval Command of the Indian Navy is located here. Ladies and gentlemen, Vizag made a glorious contribution during the 1971 war. The Golden Jubilee celebrations of India's victory in that war under Swarnim Vijay Varsh concluded recently. I recall the heroic action of the Eastern Naval Command in the naval blockade of the then East Pakistan and the sinking of Pakistan's submarine Ghazi. That was a decisive blow to Pakistan. The 1971 war remains one of the most emphatic victories in our history. Officers and sailors, India believes in security and growth for all in the region, to focus on cooperative measures for sustainable use of oceans. A large part of global trade flows through the Indian Ocean region. A significant portion of our trade and energy needs are met through the oceans. Safety of the seas and of the maritime commons therefore remains a critical requirement. The Indian Navy's constant vigil, prompt response to incidents and untiring efforts have been highly successful in this regard. During the COVID-19 pandemic, the Indian Navy has been providing aid to friendly nations by supplying medicines and evacuating stranded Indian citizens and foreign nationals in different parts of the world under Mission Sagar and Samudra Setu. The prompt and effective deployment of the Indian Navy in the times of crisis has underscored India's vision of being the preferred security partner and first responder in the Indian Ocean region. Officers and sailors, I am happy to note that the Indian Navy is becoming increasingly self-reliant and has been at forefront of the Make in India initiative. I am told that about 70% of the contents of several warships and submarines under construction in various public and private shipyards across the country are indigenous. It is a matter of great pride that India has built nuclear submarines, and soon we will have our indigenously built aircraft carrier Vikrant joining the service. I was happy to inspect Vikrant during my visit to Kochi in December last year. The deployment of indigenous naval shipbuilding capabilities is an impressive contribution to the making of an Atmanirbhar Bharat. The Indian Navy regularly engages with a large number of other navies of the world through bilateral and multilateral exercises. The aim is to enhance interoperability, gain from best practices, develop common understanding and build mutual confidence to address maritime issues. In this regard, I convey my best wishes for the forthcoming multinational naval exercise Milan 2022. I congratulate the Indian Navy for the splendid conduct of this historic event, overcoming all challenges and restrictions imposed by the pandemic. I also compliment the government of Andhra Pradesh as well as the administration and citizens of Vishakhapatnam for extending all support to the Navy for conducting this fleet review. As the Supreme Commander of the Armed Forces, this is a moment of immense satisfaction for me. The nation is proud of our brave Navy personnel. My best wishes to the Indian Navy for safeguarding our national interests. Thank you. Jai Hind. The
Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, delivering his address after the review of the Presidential Fleet Review 2022. The Honorable President recalled that the Indian Navy had played a yeoman role during the 1971 war for the liberation of Bangladesh, and the Eastern Naval Command at Vishakhapatnam was the pivot. And the Honorable Rashtrapati ji also recalled the sinking of the Pakistani ship PNS Ghazni, and that led to the tipping of scales, and Pakistan lost the war very badly when 93,000 Pakistani men and officers were prisoners of war. However, India, and now the Honorable President of India is being presented with a memento by the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Harikumar, and the Flag Officer Commanding-in-Chief of the Eastern Command, Vice Admiral Bishajit Dasgupta. The Honorable President of India and the First Lady are now looking at another memento being presented to the Honorable President of India by the Navy Chief, Admiral R. Harikumar, and the photographers are clicking away these priceless moments. The mementos have been received by the President of India. The Honorable Rashtrapati ji and the First Lady have now taken their seats on board the INS Sumitra. माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, जो कि सर्वोच्च कमांडर भी हैं भारतीय सेनाओं के, इस अवसर पर जबकि 12वें राष्ट्रपति समीक्षा बेड़े के माध्यम से उन्होंने भारतीय नौसेना की क्षमता को, उसकी कुशलता को, अनुशासन को, दक्षता को यहां करीब से देखा है, परखा है और अपना आशीष भी, अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। यह सच बात है कि भारतीय नौसेना आज आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए बहुत तेजी से इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रही है। आत्मनिर्भरता की ओर जो तेजी से कदम बढ़ रहे हैं, उसके कुछ छोटे से उदाहरण भी अगर मैं आपके साथ साझा करना चाहूं तो जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी वायुयान वाहक युद्धपोत विक्रांत, जिसने अगस्त 2021 को अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की थी, वो भारत में निर्मित। इसके अलावा मझगांव डॉक लिमिटेड ने 28 अक्टूबर 2021 को अपनी 15वीं परियोजना का जो पहला पोत आईएनएस विशाखापट्टनम, जो कि भारतीय नौसेना में भी शामिल, उसे सौंपा था और आज के इस रिव्यू परेड में, फ्लीट रिव्यू में भी उसे शामिल किया गया। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो कि स्वयं आज यहां उपस्थित हैं, 21 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में इसे कमीशन प्राप्त प्रदान किया गया था उन्हीं के हाथों से। करंज और बेला जो प्लेटफॉर्म भी हैं, उन्हें भी पिछले साल मार्च और नवंबर को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। ये सभी स्वदेश में ही निर्मित ये पोत हैं या भारतीय नौसेना के वेसल्स हैं, जो कि अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं और इन दोनों के निर्माण में, यानी करंज और बेला के निर्माण में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ही परिष्कृत और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है जो अत्याधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष ही 19 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली जो शक्ति है भारतीय नौसेना को उसे सौंपा था, जो कि आज यहां इस समीक्षा बेड़े में भी जिसे शामिल किया गया था। तो ये पूरी तरह से स्वदेश में ही डिजाइन किया गया जो आईएनएस शक्ति है, यहीं पर उसका निर्माण हुआ और इस रूप में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम का प्रदर्शन करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। अब मुख्य जो कि बंगाल की खाड़ी का जो मुख्य समुद्री क्षेत्र था, जहां पर यह समीक्षा का आयोजन हो रहा था और आईएनएस सुमित्रा के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय उस बेड़े की समीक्षा कर रहे थे, उससे अलग वापस आते हुए अब बंदरगाह की तरफ आगे बढ़ता हुआ आईएनएस सुमित्रा, जो कि जलमार्ग है, जो संकुचित जलमार्ग है, जिसके दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और उसके बीच से ये जलमार्ग गुजरता है और उसी जलमार्ग से आईएनएस सुमित्रा अब धीमी गति से आगे की ओर बढ़ता हुआ, बाईं तरफ पहाड़ी, दाहिनी तरफ भी पहाड़ी, याराड़ा पहाड़ी जो है हमारी बाईं तरफ है, उसकी पूरी एक श्रृंखला नजर आती है, जबकि दाईं तरफ जो पोर्ट ट्रस्ट विशाखापट्टनम का पोर्ट ट्रस्ट है और विशाल दूर तक जो दृष्टि जाती है उस पहाड़ी पर जो कैलाशगिरी मंदिर है, इसके अलावा चर्च है, मस्जिद है, वो सब भी दिखाई देता
सकता है, लेकिन जो विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट है उसका ट्रैफिक कंट्रोल का जो टावर है, यानी वो जो स्तंभ है, वो भी यहां से साफ नजर आ रहा है। और उसी से इस जल मार्ग के माध्यम से या समुद्री तट के क्षेत्र में विशाखापट्टनम जो पोर्ट ट्रस्ट है, जो भी जो जलयान यहां पर आते हैं या जिन्हें यहां से गुजरना होता है, उनके नियंत्रण का, निगरानी का कार्य जो है वो इसी के माध्यम से किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रदर्शन, इसके माध्यम से भारत की क्षमता समुद्री क्षेत्र में और सैन्य क्षमता वो भी साथ में प्रदर्शित की गई है। और ये इस माध्यम से हो सका जब 12वें जो समीक्षा बेड़ा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा यहां पर उसका अवलोकन किया गया, उसकी समीक्षा की गई। The Indian Navy is a partner in progress and is shouldering the aspirations of a new India, as the Honorable Rashtrapati ji mentioned. The Indian Navy enjoys commanding heights from the Indian Ocean right up to the Pacific Ocean. As someone said that whoever attains strategic importance in the Indian Ocean will attain maritime supremacy, and Indian Navy is therefore emerged as a prominent player on the international scene. As Jainendra ji mentioned that India's Navy will add another feather to its cap with the commissioning of the indigenously built aircraft carrier INS Vikrant in a few months from now, as is expected. And India's coast now stems from the Cape of Africa right to the Malacca Straits, and the domain of Indian Navy is not only to secure our borders and our oceans and seas, but also to play an important role in keeping the geostrategic position of status quo. As India is in a very important geostrategic location with many countries making their presence through dubious means, the Indian Navy has its own dominance over what we know the Indian Ocean region and is committed for the global commons. And India is committed to the strategic maritime issues, the UN Convention on the Law of the Sea, and the Indian Navy's maritime power stands as a strong pillar in guarding our supreme national interests at home and abroad. The Indian Navy is slowly going to be a builder's navy, and the expansion plan is to govern the two oceans, that is the Indian Ocean as well as the Indo-Pacific construct. And we know that we are going through this small channel, if we may call it that, between the two hillocks, the Yarada hillocks to our left, and to the right the hill which has the temple, the mosque and the church, as well as the control tower of the Vishakhapatnam Port Trust. It was constructed by the well-known engineer Dr. M. Vishweshwaraya, who played a pivotal role in solving the initial problem of this natural harbor. Indian Navy's role is not only limited to securing our coastline, maritime issues, but also tackling terrorism, piracy, human and contraband trafficking, illegal and unregulated fishing, arms running and poaching. These pose the myriad challenges to maritime safety and security in the region. Response to these challenges requires enhanced situational awareness of the maritime activities in the region so as to enable security agencies function effectively. The Indian Navy has it all, and it is going to play a very significant role in maintaining the security of the upcoming Chennai Vladivostok maritime corridor. This is going to be a maritime corridor of immense potential, with the port starting at Chennai and ending in the Russian Far East of Vladivostok.
Prime Minister during the India-Russia Annual Summit of 2019 has spoken about the Vladivostok Chennai corridor as an important paradigm in India-Russia relations, and this is going to be of very strategic importance to both Russia and India. Indian Navy is a capable force and has aircraft carriers, tankers, landing platforms, docks, mine countermeasure vessels, submarines, and integral helicopters. India has also enhanced the Indian Navy's surveillance capability through induction of long-range maritime reconnaissance aircraft, integral helicopters, and high-altitude, long-endurance aircraft for remotely piloted aircraft. The focus has been to augment capability through induction of modern platforms, weapons, and sensors. From domain awareness to the establishment of information fusion based on Indian Navy's management and analysis, the Indian Navy is all set to enhance maritime security and will be working on real-time basis with vessels of interest with friendly nations on white shipping. The Indian Navy has made important strides in the formation of combat capabilities and construction of weapons and maritime equipment. And very soon the Navy will be augmenting its arsenal, and we are going to see, as we mentioned earlier, the induction of the first indigenously built aircraft carrier, INS Vikrant, which will augment India's naval process, and India's role in the region is globally recognized, and India is seen as a protector of the regional order, particularly as it pertains to maintaining open sea lanes and freedom of navigation and picking up the baton of becoming the net security provider of the region. So India has entered the 21st century as a blue water navy, and the Indian Navy is all set to meet any challenge from any quarter, and the men of valor who safeguard our water boundaries have displayed supreme courage and their dedication, discipline and duty to the motherland. And it is indeed a fitting moment for all of us, and these moments which everyone aboard the INS Sumitra will cherish. It has been a day of action, of beautiful sailing boats, of mean destroyers, of the lovely corvettes, and of course the Peace de Resistance was the flypast by the Indian Navy's Air Squadron, and also by the demonstration of underwater rescue. These are some of the things that people who are present on board the INS Sumitra are going to carry for forever in their minds. And it's been a long morning, a sunny morning, and now the INS Sumitra is slowly inching her way towards the port. And the Eastern Naval Command's headquarters is Vishakhapatnam, which also incidentally happens to be the birthplace of one of India's foremost patriots, the well-known Telugu poet and playwright Guruzada Apparao was born in Vishakhapatnam, and he said, Deshamante matti kadoy, Deshamante manusuloy. Nation does not mean the land. Nation means its people. The Indian Navy has proved time and again that for it, people matters first. Nation matters first. And their motto of Shamno Varuna will lead them to greater glory and greater heights in the years to come. Each Indian is proud
of its armed forces, and the Navy of India has proved time and again that it is a game changer and a force multiplier. सक्रिय जल के रास्ते से यानी जलमार्ग से होते हुए आईएनएस सुमित्रा, जो कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के बेड़े का पहला पोत, जिसमें स्वयं वे सवार हैं, इस समय जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है उसके तट पर पहुंचता हुआ हमारी बाईं तरफ वो मुख्यालय का भवन भी नजर आ रहा है, और तमाम अलग अलग जो पोत हैं वो भी, जो कि यहाँ पर लंगर डाले हुए हैं और वे वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बेड़े में, जो कि माननीय राष्ट्रपति महोदय का बेड़ा, इसमें आईएनएस सुमित्रा के अलावा दूसरा पोत आईएनएस सुमेधा और तीसरा पोत आईएनएस सावित्री, ये तीनों एक पंक्ति में आगे की तरफ अपने अपने स्थल की तरफ बढ़ते हुए, जो मुख्य तट है वहां आईएनएस सुमित्रा के पहुंचने का निर्देश है, क्योंकि वहीं से माननीय राष्ट्रपति महोदय नीचे उतरेंगे और एक बार पुनः उन्हें सलामी दी जाएगी, और सलामी देने के बाद, गार्ड ऑफ ऑनर के बाद, वे वापस प्रस्थान करेंगे यहां से। ये पूरा अवसर, ये पूरा आयोजन जिसका समन्वय जो है वो पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी कमान ध्वजाधिकारी वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, वो अपने अंतिम चरण में यहां पहुंच रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जिस तरह से स्वयं इस बात का उल्लेख किया अपने संबोधन में, जहां उन्होंने भारतीय नौसेना की तमाम उपलब्धियों का और भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम के बारे में जिक्र किया, उल्लेख किया, वहीं आगामी 25 फरवरी से 4 मार्च तक जो मिलन का यहां पर आयोजन होने जा रहा है विशाखापट्टनम में ही, और उसका आयोजन, उसका समन्वय भी भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान द्वारा ही किया जाएगा। वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, क्योंकि उसमें दुनिया के ऐसे अनेक देश जो है उनकी नौसेनाएं हिस्सा लेने जा रही हैं, जो आपस में अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ तो बांटेंगे ही, लेकिन जो अत्याधुनिक उनकी शैली है, कार्यशैली है, उसका या अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन, युद्धाभ्यास और आपस में जो विचारों का आदान प्रदान होता है, वो सबके लिए लाभप्रद होता है। 1995 में पहली बार पोर्ट ब्लेयर में मिलन का आयोजन हुआ था, और तब मात्र 4 देश इसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। और इस बार उम्मीद है, इस बार ये आशा की जा रही है कि लगभग 45 देश जो है इस आयोजन में यानी मिलन में हिस्सा लेंगे, और यहां रहते हुए ये भारतीय नौसेना के साथ मिलकर तमाम तरह के विचारों का, ज्ञान का, अनुभव का आदान प्रदान करेंगे। ये भी संभावना है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं मिलन 2022 का उद्घाटन करने के लिए पधारेंगे। ये भारतीय नौसेना के लिए अभी तक की जो यात्रा रही है, पिछले 75 वर्षों में आजादी का अमृत महोत्सव का ये वर्ष है, और इन 75 वर्षों में इसने जो प्रगति की है, जो विस्तार किया है अपने कार्यक्षेत्र में, और अपनी गुणवत्ता जो बढ़ाई है अपने दायित्वों के निर्वहन में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आज भारतीय नौसेना लगभग 70,000 सैन्य कर्मियों के साथ, नौसैनिकों के साथ, जिसमें 50,000 इसके अलावा कर्मी हैं, और अब तोपों की सलामी के साथ स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय का। और इक्कीस तोपों के साथ सलामी दी जा रही है। ये तट पर वापसी का निर्देश और इशारा भी है, और ये तट जहां से प्रस्थान किया था आईएनएस सुमित्रा ने, और आईएनएस सुमित्रा उस बेड़े का अग्रिम पोत जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय सवार थे, बेड़े की समीक्षा के लिए। भारतीय नौसेना
जो पिछले 75 वर्षों में प्रगति के साथ साथ जो आगे बढ़ने का एक संकल्प भी दोहराते रहे हैं और आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गर्माई उपस्थिति में उसे और भी विस्तार मिलेगा। भारतीय क्षेत्र में अगर हम अपने समुद्री हितों की बात करें, जो कि स्वयं में भारत जो है हिंद महासागर क्षेत्र में जहां की 7,516 किलोमीटर की अपनी लंबी जो सीमा रेखा है समुद्र के साथ लगती हुई, उसकी संरक्षा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब इस समय पोत जो है वो बिल्कुल निकट आ चुका है, स्थिर होता हुआ तट के साथ लगता हुआ, और इसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय का यहां से प्रस्थान होगा। हिंद महासागर क्षेत्र में दुनिया का 40% जो है ऑफशोर तेल का भंडार है और इससे इसकी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका और इसका स्थान है। 65% के करीब खनिज और 31% प्राकृतिक गैस का रिजर्व भी इसी क्षेत्र में मिलता है और इसीलिए चूंकि दुनिया भर की जो आबादी है उसका 30% जो है वो यहाँ इस क्षेत्र में रहता है, तो इस रूप में इस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पूरे क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से भारत के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में शांति हो, स्थिरता हो, सभी हितधारकों के बीच आपसी विश्वास हो और बेहतर तालमेल हो, और इसीलिए इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आगामी आयोजन जिसका उल्लेख माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किया, यानी मिलन का, वो भी इस रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र में जो समुद्री आतंकवाद की जो पीड़ा महसूस करते रहे हैं हम, या उसकी आशंकाएं जो पूरी दुनिया महसूस करती है, इसके अलावा समुद्र में डकैती जैसी परिस्थितियां और गतिविधियां जो हैं वो न सिर्फ इस पूरे क्षेत्र के लिए बल्कि भारत के साथ साथ दूसरे देशों के लिए भी बहुत घातक है, और इस रूप में भारतीय सेना उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसलिए आवश्यक भी है कि भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल और अन्य सभी ऐसे संगठन अपनी कार्यक्षमता में विस्तार करते हुए क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए अपनी भूमिका निभाएं और भारत की प्रगति के लिए अपनी भूमिका, अपने दायित्वों का निर्वहन वो बेहतर से बेहतर ढंग से करें। आज यही संकल्प और हमेशा यही संकल्प जब हम अपनी भारतीय सेना के किसी भी अंग से, भारतीय सेना के किसी भी पक्ष से या उसके आयाम से जुड़ते हैं, तो यही प्रेरणा हम सबको मिलती है। And the Honorable President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, Shri Ramnath Kovind, is now exchanging pleasantries with the dignitaries present on the presidential deck or the top deck of INS Sumitra. That was the presidential yacht for the Presidential Fleet Review 2022. And the Indian Navy, which is a force multiplier force in the 21st century, is going to play a very important role, keeping in mind India's geopolitical and geostrategic plans in sync with our neighborhood first and Act East policies. The Indian Navy is going to play a stellar role in maintaining maritime order and rules-based order, ensuring the passage of navigation and overflights. These are important issues that the Indian Navy would be tasked in the coming years. And we can now see that the ramp that connects the INS Sumitra with the port of Vishakhapatnam is now being affixed to the INS Sumitra, and this is also very skillfully done, as the ramp is lowered through a crane, and officials are awaiting the disembarkment of the Honorable President of India, the First Lady, and other dignitaries from the INS Sumitra. It has been an action-packed morning where we saw the daredevilry of the men of the Indian Navy. The Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, exchanging a few greetings with the Chief of Army Staff, General Manoj Mukund Narbane. And also it was in fitness of things that the three serving chiefs, the Chief of the Army Staff, the Chief of Air Force, and the Chief of Naval Staff were present on the occasion of the Fleet Review by the President of India. And this but comes once during the tenure of the President of India, and till now it has been held 12 times. The Union Minister
Shri Purushottam Rupala, and other dignitaries are also now exchanging greetings with the First Lady and other dignitaries. And everyone is awaiting the go-ahead signal from the authorities to start disembarkment. The governor of the state of Andhra Pradesh, Shri Vishakhapatnam Harichandan, is also exchanging pleasantries with a few guests. And in a short while from now, the Honorable President of India will disembark from the INS Sumitra. Those who were present on board the INS Sumitra will cherish memories forever. They saw the best of India's equipments, the best of Indian servicemen, and their gallantry, their bravery, and their skills. It was indeed a scintillating display of sheer skill, efficiency, energy, and discipline. The ramp has now been affixed to the INS Sumitra, and some officials have just taken an inspection and are coming down from the INS Sumitra. And the Honorable President of India, the First Lady, and other dignitaries will be disembarking in a short while from now. The photographers are already in place to capture these valuable moments on their cameras. And in just a couple of minutes from now, the disembarkation will begin from the INS Sumitra. कौशिक, एक बात तो है कि भारत में जो नौसैनिक गतिविधियों की जो कार्रवाई है या इतिहास है, बहुत समृद्ध और बहुत प्राचीन है। और यहाँ तक कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करने की जब मैंने कोशिश की तो मुझे हैरानी हुई कि लगभग 2500 से 3000 साल पहले तक भारत में जो समुद्री सेना है या नौसेना है उसके तमाम उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि गुजरात में लोथल में भी इसके प्रमाण मिले हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता के समय विदेशों से, बहुत सुदूर देशों से व्यापार करने के हमें इतिहास में ऐसे कई सारे उल्लेख मिलते हैं। तो इस रूप में देखा जाए तो भारत का संबंध समुद्र के रास्ते सदियों से रहा है और व्यापार के साथ साथ तमाम तरह की रणनीतिक और राजनीतिक कूटनीतिक गतिविधियां भी उसके माध्यम से संचालित की जाती रही हैं। और यहाँ तक कि अगर हम दक्षिण भारत के तमाम राजवंशों की बात करें, उसमें संगम युग में नौसेना बेड़ों की जो भूमिका है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। इसके अलावा राजाराज चोला और राजेंद्र चोला ने दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों पर, जो कि बहुत दूर थे, ऐसे द्वीपों तक जाकर आधिपत्य स्थापित किया। और इस वंश का उन द्वीपों पर 200 वर्ष से भी अधिक समय तक का एक छत्र राज्य रहा। और वो सब इसलिए संभव हो सका कि वो सामुद्रिक क्षेत्र में, समुद्र के क्षेत्र में अपनी ताकत को उन्होंने बहुत सक्षम किया, बहुत बढ़ाया। यहाँ तक कि उस दौर में भारत में जिस तरह के शिप्स या पोतों का निर्माण होता था, जो तकनीक यहाँ पर थी पोतों के निर्माण की, वो विश्व में अपने आप में अद्वितीय थी। इसलिए यहाँ बने हुए पोत जो है वो विदेशों में भी उनकी आपूर्ति की जाती थी। इस तरह के टेक्निक और इस तरह के इंजीनियर्स यहाँ उस पोतों के निर्माण के लिए उपलब्ध होते थे। तो व्यापार हो या समुद्री क्षेत्र की रक्षा का मामला हो या इसके माध्यम से तमाम दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी स्वतः ही होता था। मौर्य साम्राज्य या चोल वंश के राजाओं का इस बारे में बहुत ही विशेष उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख मुझे भी बहुत खुशी से और मुझे हैरानी भी हुई इस बात को जानकर कि जब मैंने रामायण के बारे में पढ़ा कि उसमें किष्किंधा कांड में इस बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि अलग अलग द्वीपों में जाकर वे सैन्य जो समुद्री रास्ता है उसके माध्यम से जाकर मां सीता की खोज करें। समुद्री व्यापार के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण आयाम यह रहा है कि बौद्ध धर्म, जो अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित धर्म रहा, इस देश से उपजा, इस क्षेत्र के देशों में, सुदूर पूर्व के देशों में या अन्य दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये धर्म पहुंचा। अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य उसके पहले, बाद में अशोक,
फिर पल्लव, फिर चोल, पांड्या, चेरा वंश, ये सभी इनके माध्यम से वहां तक ये जो यहाँ भारत की संस्कृति और भारत के अध्यात्म और दर्शन का विस्तार हुआ, ये सब समुद्री रास्तों से ही हो सका। इसलिए इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। And the presidential limousine has now arrived just near the ramp of INS Sumitra, and very shortly the Honorable Rashtrapati Ji, the Supreme Commander of India's Armed Forces, Shri Ramnath Kovind, the First Lady Srimati Savita Kovind, and other dignitaries will be disembarking from the INS Sumitra after the completion of the President's Fleet Review 2022. And the Supreme Commander of India's Armed Forces did mention in his address on board the INS Sumitra that he was extremely satisfied and gladdened by the heroic skills of the Indian Armed Forces, and especially lauded the efforts of India's sailors and other ranks who play a pivotal role in keeping India safe from aggression from water. The Honorable President also mentioned that the Navy will be playing a significant role in the years to come, and he also appreciated the indigenization efforts of the Indian Navy, and very soon we will be having indigenous vessels, indigenous aircraft carriers, and indigenous armaments also. The Honorable President of India is expected to disembark from the INS Sumitra any moment now, along with the First Lady, Srimati Savita Kovind, the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Harikumar, the Chief of the Air Staff is Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, and the Chief of the Army Staff, General Manoj Mukund Narvane. And the limousine is ready to welcome back the first citizen of the country, the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, and the presidential entourage is getting things in place. As with the movement of VVIPs, it is customary for the security agencies and other officials first to secure a safe corridor for the passage of the dignitaries, and those efforts are being made to have the area around the presidential motorcade completely sanitized, so as the Honorable President and other dignitaries can disembark and get on to their motorcade or their waiting vehicles. And the photographers are clicking away. There has been a separate enclosure for photographers here who have come to capture these moments, these historic moments rather, in their cameras. And we now see that the First Lady, Srimati Savita Kovind, is now disembarked from the INS Sumitra, the presidential yacht that was earmarked for the Presidential Fleet Review. And Honorable Rashtrapati Ji, the President of India, the Supreme Commander of India's Armed Forces, Shri Ramnath Kovind, has boarded his vehicle, and in a short while will be departing from the Eastern Naval Base
at Vishakhapatnam. It has been a wonderful morning where the Honorable President of India and other dignitaries witnessed the heroism of our men in uniform in the high seas. तो श्रोताओं, ये राष्ट्रपति द्वारा नौसेना बेड़े की समीक्षा का ये आयोजन जो अपने क्रम में 12वां आयोजन था और इसे यहाँ पर आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का जो पूर्वी कमान है विशाखापट्टनम में, वहां पर इसका आयोजन किया गया, वो अब संपन्न हो रहा है क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने वाहन में सवार हो चुके हैं और यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है संस्कृत में शं नो वरुण, यानी हे वरुण देवता, यह जल के देवता, सबके लिए शुभ हो आप, सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके लिए आनंददायी हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है और इसका भाव भी उसी रूप में है और इससे भारतीय नौसेना की जो अपनी भूमिका है, जो उसका लक्ष्य है, उसका गोल है, उसका उद्देश्य है, वो भी बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। एक सकारात्मक स्वरूप उसका निकल कर आता है और यही कामना श्रोताओं हम आपके लिए भी करते हैं। यानी आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण से, सजीव प्रसारण से जो हमने आईएनएस सुमित्रा के डेक से किया, टॉर्पीडो डेक से जो हमारी कमेंट्री बूथ है, और यहां से पूरा विवरण हमने आप तक पहुंचाया है इस समीक्षा बेड़े के पूरी गतिविधि का, ये अब यही संपन्न होता है। आप इस प्रसारण से जुड़े, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय का वाहन और उनके वाहनों का काफिला अब यहां तट से प्रस्थान करता हुआ एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं हम आप तक प्रेषित करना चाहते हैं। और हम जब हमारे सैनिक इस तरह से देश के लिए अपने आप को समर्पित करके कर्तव्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो एक देशवासी के रूप में हम भी अपने दायित्वों का निर्वहन उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए करें, ये हम सबकी अभिलाषा तो होनी ही चाहिए, होती भी है। आकाशवाणी की तरफ से इस उम्मीद के साथ यहां से माननीय राष्ट्रपति महोदय के बाद अन्य अतिथियों का भी प्रस्थान आरंभ हो चुका है। मैं जैनेंद्र अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय और हमारी आकाशवाणी की कार्यक्रम तथा तकनीकी टीम के साथ आपको पुनः आपके लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए आप सबको मैं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। You had been listening to the live description of the President's Naval Fleet, a ceremonial event organized by the Indian Navy at Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, in the gracious presence of the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind. Our commentators were Jainendra Singh in Hindi and Kaushik Roy in English. Originated by All India Radio Vishakhapatnam, this broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.